ultimately there is only one God, and that is what one has to realize through these various approaches. And similarly, we have different routes to health. We have, you can say in medicine, you have different religions. You have allopathy, you have Ayurveda, you have Unani, and all other systems. And through them, we try to reach health, or through that, we try to eradicate disease. So all these routes are different, but uh, we have to see whether we can achieve the best with one route or we need to combine it with the others, and whether it is safe and feasible to combine an approach with the other one. Because that also, every system has been now developed, and one has to see whether they can be combined. Recently, a very important concept has emerged, and that concept is that of One Health. And even World Health Organization is now recommending that we start thinking in terms of One Health. And what is the meaning of One Health is that humans don't have to just think of their own selves. They have to think of plants, they have to think of animals, they have to think of environment as a whole. And the environment has so many inanimate and animate objects which actually determine the quality of life of humans as well as other individuals. As you know, Earth is the only planet on which we have life, and so far, I mean, that is the only planet where life is present, and we want to preserve it. Although we are making attempts to go to other planets, but we find that even other planets, it was not going to be very easy for us to inhabit it. Hence, I can now see Swamiji sitting there. My pranam, Swamiji. And we are talking of integrated medicine, and I think that is what I'm seeing. And we are also taking an approach which is trying to combine one system with another. So as you can see in this slide, on one side there are people who protect human, animal, and environmental health along with other partners. So this is one side of the story. And on the other side, we have to achieve the best health outcomes for people, animals, plants, and our environment. Because environment is something which will ultimately determine whether we are going to survive or not. If the environment is surviving, only then we are surviving. If the plants are there, only then we'll get oxygen. And we will certainly meet catastrophe if we see that there is global warming, and that is going to lead to excessive water which is going to come out of the seas because the glaciers and the snow is going to melt, and that is going to lead to catastrophe, and then the humans may not survive in that kind of environment. So hence, there is a great need of coordinating. That means there are people who should coordinate all these efforts towards unification of systems. There should be a lot of communication between the systems, as has started happening. There was a time when the Ayurvedic physicians would not talk to the allopathic physicians, and allopathics would also not talk to the Ayurvedic ones. But now the gateways have opened, and there is a nice flow of thoughts in both the directions. After communication comes the collaboration. That means we should try to collaborate. We should not only just talk to each other, we should also set up studies and projects in which we can go into the depth of philosophy of each system and then try to see what are the elements which can be unified, and then those can lead to better outcomes of health as defined in the concept of One Health. That means not just the health of humans, but also the health of animals, birds, plants, and the environment as a whole. But now the question arises, can joining of paths lead to greater achievement? Because sometimes if you, as they say, too many cooks spoil the broth. If there are too many people who are thinking about something, you may not be able to get the best results which you may get
by following just one system which has been developed in a very authentic way. For example, there are systems like Unani systems in which you have, again, they also think of that most of the diseases arise from the various elements, that is air, water, earth, fire. All these are elements which have to be balanced in a body, and only then one can lead to a healthy life. Similarly, in Ayurveda, we have different body types. We have Vat, Pitta, Kapha, and all these body types are defined in a very scientific way. And now there are studies which are showing that all these types can be differentiated from each other, even genetically. They have different kind of polymorphisms which are present in some of the body types, and they are predisposed to develop a particular kind of diseases. But now if we combine these methods, so I think it's very important for all of us, those who want to practice integrative medicine, to go into the philosophy of each of these systems of medicine and then try to develop a unified approach which can lead to best results. Because otherwise, if we just try to do it superficially, then there is a possibility that we may not get good results because we will not be able to understand the various nuances which are used in by the different systems of medicine. For example, homeopathy. Homeopathy is something which has of course come from from Germany, and it is now being practiced in India in a very large way. There are several colleges of homeopathy which are there. They give medicines in a way that they want to aggravate the disease first, and then they see that by this aggravation, the body tends to overcome that particular disease. This is something which is very akin to immunotherapy, something which we use in allopathic medicine, that you give those small elements of a particular antigen or a disease-causing substance to an individual, and that ultimately leads to development of immune response to that particular disease agent, and then the body overcomes it. And this is what probably was seen in ancient times, and I don't know whether that was prescribed by Ayurveda, that small amounts of poison, even snake venom actually was given to Vishkanyas, where they developed the capacity to tolerate that snake venom because it was given in very small amounts to begin with, and gradually the body overcome many of these poisons and they could easily ingest it. Similar concept has been used in various other instances also. So what I mean to say, concepts in different systems of medicine which can be studied and which may lead to similar results. So hence, there is a possibility that we may be able to reach at a unifying hypothesis of disease and then try to treat these patients in a different or in a very unified way. We can pick up good things of different systems of medicine and then see whether that integrated approach leads to better results or not. So we need to study the outcomes, and the outcome here is better health. It is good to be acquainted, when we go in for relationships, it is very good to be acquainted, that you just say hello to somebody and you shake hands or you say namaste and that's it. But if you want to have a long-term relationship, you need to have an in-depth study of the other person or of the other system. And that is what is required in situation when we want to integrate different systems of medicine. Now, it is not just enough that you start working on something. That means you start giving medicines in an integrated way. We run in what is known as evidence-based practice. That means whatever approach is developed to, say, treat a disease. For example, let us say hypertension or diabetes. These are two diseases which are very common, and in fact they are present in about 50 to 60% of people who are more than 55 years of age, as when you start testing them. So these diseases can be very easily treated with different systems of medicine.
Allopathy has several drugs which can control these disorders. Ayurveda has drugs, and they also are very effective. And there actually there is a unification because plant products actually give us drugs. And we know that many of these plants which we use in different systems of medicine, say in Ayurveda, we use plant products. We may use leaves, we may use flowers, we may use stem, we may use roots. And we know as a matter of traditional knowledge what is the component which is going to come out of a particular part of the tree. For example, in cinchona, cinchona is a plant, as a tree whose bark gives the drug called quinine, and that was the drug which was used for a long time to treat malaria, and it still is used to treat falciparum malaria, which is very difficult to treat otherwise, and for which the usual chloroquine doesn't work because it is the organism has acquired the Plasmodium falciparum, which causes it, is actually resistant to that medicine. But then there may be thousands of drugs in various plants which can be used for treating these problems. We know that from China, Artemisia gave us a drug called artemisinin, and that artemisinin was used for treating falciparum malaria, and people who discovered it actually got the Nobel Prize. But it is quite likely that the Indian system of medicine also knows that. And I would say that it is not just humans which are treated this way. There are certain animals also who know how to treat themselves. We know we all animals can't go to veterinary practice, doctors. But many animals actually know how to treat themselves. You must have seen dogs and cows and others when they stop eating, or they want to smell certain plants. They are not just treating them. And the dogs actually, especially, they are used to smelling certain plants and then trying to heal themselves. So it is actually all nature in which you can find new elements. Because many of the drugs or many products are actually gaseous. They may be inhaled, and that is how they treat our systems. That is how some of our nebulized drugs or aerosolized drugs work. So smelling some plants also can be, a process which can heal a person, and because many molecules are coming out of that thing and they are entering our system. So for that we need to have trials, we need to have basic studies, and it's really good that Patanjali has set up this Institute of Basic Sciences where drugs are being developed, where in silico drug discovery is taking place. We know that many of these products which are coming out of these plants can be then synthesized, in a way that we can get them in bulk. But the difference in Ayurveda is that the treatment which is given to patients is so much natural that it can lead to better healing rather than just giving drugs which may have side effects, which have effects, which are very strong effects, but they also have side effects. So all this theory would then need to be studied by practitioners of integrative medicine and would then be subjected to epidemiological studies and different kind of trials of different phases, phase 1, 2, 3, and 4, which would then exemplify that this is the therapy which should be taken to practice. But of course, that will take a lot of time. If we start wasting time in some of these things, we may find that we are losing very precious time. So I think one has to devise a policy as to what drugs or what things can actually be used readily, because there are so many things which are in use. For example, turmeric. Now, turmeric gives us uh, so many it's a very large molecule which acts as a scavenger molecule, and it gives us a drug called curcumin. And this curcumin has been so effective in treating interstitial lung disease. And many people actually take a lot of, they put haldi in milk and then they take it. And it's quite likely that different substances which are present in turmeric, the pure turmeric, is something which would heal not only their lung disease, but it also gives them protection against cancer, especially colonic cancer. It can also give protection against liver diseases.
So it's like a master molecule which can protect so many things. And that is why probably the patent which the Western world wanted to take for this medicine or this spice which we have in India was not granted or was not considered because it was so widely used and was still found to be very effective. And there's a disease called cystic fibrosis, which is a genetic disease, which leads to affection of lungs as well as pancreas, and that leads to malnutrition and it leads to recurrent respiratory infections in children. And since it's a genetic disease found mostly in Caucasians, this has a lot of research has been done on this particular disease, and there was a study where they showed that use of curcumin actually led to reversal of some of these genetic defects. Now, how that was happening was because of intracellular trafficking of molecules, which was modified by this particular agent, and that was leading to some degree of improvement in these patients. Similarly, there are plants like Acorus calamus, which has been used, Vach, which is known as, which has been used for treating asthma. And asthma medication, which combines Vach as well as other things like ginger or glycyrrhiza, which is mullety. And so some of these, when combined, they can actually lead to treatment of asthma. But many of these Ayurvedic preparations actually are a storehouse of drugs. And I can see Professor Gupta here, and I think he has spent his life researching on drugs and finding new drugs out of various agents. And I think plants can actually yield so many drugs. And we know that we are falling short of drugs, especially in the era of antibiotics, because most of the organisms are becoming resistant to the drugs. And here I would like to just relate a very interesting story to you because I'm in Rishikesh these days and you are in Haridwar and you all are, uh, you know, uh, Ganga ji is at all the places throughout India. And it has been seen that Ganga water has healing properties because Ganga water contains certain microorganisms which are known as bacteriophages or viruses which can eat up bacteria. And that is being proposed as one reason why you never, Ganga water never rots, it never goes bad, it never smells. Although there were so many people who were bathing in the Kumbh, but the Ganga still remained pure. And that the reason was that it has certain qualities. And those qualities are coming not from just the mineral elements which are there in this, they are also coming from some of the biological elements which are there in this water. So some of our traditional knowledge actually once put on firm footing can actually lead to treatment of, so these bacteriophages which have been derived from Gangaji are being used to treat very severe resistant infections like Klebsiella and Pseudomonas, which are there in many of surface wounds which may be there, or even when they are present in as a septicemia. So there are many Swamijis actually who drink only Ganga water, and probably that is the reason because they know by their traditional wisdom that this is something which can lead to longevity because it alters our gut flora, it leads to a better immune system and also better neurological system. So we know now that there are some systems which can be good for holistic health, and so we need to think of those systems. We know yoga is something which has been established beyond doubt, and I think it's Patanjali has really contributed to this personally by Babaji, Param Shraddhay Baba Ramdev ji. We can call him Professor Ramdev ji or Dr. Ramdev ji, and he has actually given us this, has put yoga in such a firm footing that now it's become a household practice, not only in India, all over the world. And this can be one basic thing for assured mind-body health. And we know that along with this meditation, if practiced during the early hours of the day, that means the Amrit, which is known as Amrit Vela by the Sikhs, and also the Brahma Muhurat by Hindus,
that is the time when, if you do meditation and concentrate on Om, you can actually lead to, this can actually lead to some internal discoveries. And then comes reflection, because just finding internal discoveries is not enough. It must reflect into our world around us, so that we do some good to the people who are around us, and we reflect on various ways how to do that. And then comes the balanced thought and action, because balanced thought and action, thought is not enough, it must translate into action, but action cannot come without a thought, and hence it must flow from purity of thought, and that comes by meditation. Then you have pure diet, and pure diet is something which is, we know that we are losing our purity of diet because we are getting into certain fast foods, the Western diet. You just want to munch something, you don't smell your food, you don't relish your food, you don't even pray to God that yes, He's given you food, and that leads to ill effects of food. And that is the reason we are sometimes just eating listlessly, watching a television, we are just munching things, and that is leading to several diseases. Then closeness to nature is very important, and that comes from there. The word comes naturopathy, and whether it is your thought, whether it is your what you wear, what you eat. So that's the lifestyle. And as they say, simple living and high thinking is something which is really something which is required. And above all is conserving environment. It's very important that we limit ourselves to amassing things. We need not have so much to each individual, so that the other people start suffering from the lack of it. And from that is how we'll conserve our environment. If all of us think that we need to use a lot of water for different types of ways of life, the water will certainly go scarce one day, and we'll all be left without water. So one has to start thinking of others, and again there comes the concept of one health, that you have to think of other people, other individuals, and that makes your thinking very, very positive about the earth. I would just relate to you that we live in Ames Rishikesh, and Ames Rishikesh is actually built on a land which was earlier Pashulok. This was a place where cows and all other animals would grow. And even now, when you walk alongside the road, which is on the Gangaji and also in other areas, you can actually smell cow dung. And sometimes, it seems like you are smelling some scent, because that is not something which you get everywhere. And that rustic environment which is available all around Rishikesh, and there have been people who come from the west, and they feel that there is something, some vibration in that place which brings out the best in them, and that is something which is very healthy also. And many of these people actually have cured their fatty liver and their coronary artery disease by simply adopting a simple lifestyle. So, so these are some of the approaches which have to be adopted in integrated medicine. So amalgamation of Ayurveda, homeopathy, Unani and allopathy may not be possible totally. So all the experts who are sitting here must deliberate on how can we integrate these varied systems of medicine. There are systems which are based, but plants is something which have been at the basis of many of these systems. And the elements which come out of plants are something which have been used as drugs. And philosophy of simple living and high thinking is, I think, promoted by everyone, every religion. And like there are different religions, there are different systems of medicine, and they all lead to realization of God. And similarly, all the systems of medicine lead to realization of good health. So the study of structure and function is central to all components, but the mode and constitution of therapeutic approaches may lead to confusion sometimes. Because, and that is how we have these mind-body practices, which may have psychological component, a physical component, and physical component is influenced by nutritional component, and so is psychological as well.
There are different type of drugs which can come out. There are essential nutrients. There can be foods as medicine. As we know, some of the spices which we are using in India are medicines actually. Foods can also be, can lead to affection of metabolomics and our metabolites which come out of our body. Disease, diet and dietary practices are extremely important. And hence, all these things can lead to unification of systems. We know that surgery is useful in very small proportion of physical diseases. Of course, surgery also leads to cure of many diseases. For example, cancers, if they are detected early, they are amenable to surgery and person becomes healthier. So allopathy that way has certain surgical techniques, although Sushrut himself was a surgeon as a proponent of Ayurveda, and some of these diseases like they had conducted so many surgeries, and surgery of rhinoplasty I think was something which came out of India as a surgical technique. So plants to medicines is not a new concept. Several of these plants yield medicines, and I was as discussing earlier on, these medicines are derived from plants by different methods. They may be dissolution into lipids like oils, or that may be dissolution into water when we boil the things, or they may be some of the drugs or plant products may just be coming out of grinding of plants. So there are different processes to which plants are subjected and the plant products are subjected, and they give rise to several health benefits which may be there. So plants can be source of various medicines. In fact, they are source of many medicines. And several therapies in Ayurveda are derived from herbs. Homeopathy also has plant components used in ambrosia, as you know, is something which comes from plants. Used in therapy, and so are Unani. Siddha seems to be an offshoot of Ayurveda, I think, and that is something where in Hyderabad there is a tribe where Siddha is practiced. And these people live up to like 150 years of age. Some of it may be genetics and epigenetics, but it is also that longevity is dependent upon the lifestyle that these people have adopted. So many modern drugs used in allopathy have been derived from plants. As I gave you the example of anti-malarials, there are several anti-cancer drugs, anti-diabetics, which have been derived from plants. So naturally occurring molecules which are derived from plants can act as templates for several new drugs to be used for disease where there are no satisfactory cures. So we can derive this knowledge from our ancient texts and the books which are there, and we can get that many of these plants, their pericarp, their endoderm, their scutellum, the seeds, the different parts of the seed can actually yield different types of drugs. And they can be, for example, if you expose mushrooms to sunlight, they say they synthesize vitamin D. And that vitamin D, if ingested, can actually give you a very good quality of vitamin D, which helps you in fighting so many diseases. We know that most of us are vitamin D deficient these days, and we need to replenish it by taking medicines, but there are several plant products which can actually give you this particular vitamin. So what I would like to say is that integrated medicine is something which will certainly be now coming up, and different systems of medicine would have to be united, and we should be all working towards one outcome, and that is good health for all human, plants, animals, and for the earth. Those kind of outcomes would have to be decided in our trials, and I think that is the way to go now onwards. I'm very thankful to you for giving me a patient hearing. Thank you. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर मीनू जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, और आपने इतनी व्यस्तता के बीच समय निकाला। आपकी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ साथ जो अपना एंसेंट मेडिकल सिस्टम है उसमें आपका बिलीफ भी है और आपने उसके परिणाम भी देखे हैं। तो आप तो हमारे अपने हैं, और आज आप
चंडीगढ़ में रहते हुए भी हमारे साथ सम्मिलित हुए। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन सबकी ओर से आपको, बहुत बहुत प्रणाम बहन। For a new batch of medical students who have joined in Mohali, and I will be proceeding to that. If there are any questions or comments, I'll be very, very willing to answer. आपकी व्यस्तता आज ज्यादा है तो हमने कहा कि बहन जी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। फिर हम नहीं सर, आप अपना जरूर आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, क्योंकि उनसे हमें बहुत मजा आता है। डॉक्टरों ने निश्चय किया है कि वो सबसे प्रीति करेंगे। हमने एलोपैथी का और आयुर्वेद का ब्याह करवा दिया है। तो आजकल शादियों का जमाना है ना, सर्दियों में शादी बहुत करते हैं। तो ये सारे हमारे जो डॉक्टर हैं, अब इनका तो दोबारा ब्याह कर नहीं सकता है, बूढ़े बूढ़े हो गए हैं। तो इनकी पत्नियां नहीं तो इनको घर में नहीं घुसने देंगी। तो खैर ये तो थोड़ा हंसी मजाक का था, लेकिन आज बहुत अच्छा सत्र रहा। डॉक्टर गुप्ता जी ने, डॉक्टर अनुराग जी ने, और ये चिंतामणि डॉक्टर भी, इसने सबको चिंता में डाल दिया था एक बार के। और वहाँ तक कुछ अभी जो है भोजन पा करके और कुछ लटके भी ले रहे थे। और हमारे दाईं तरफ भी डॉक्टर्स हैं और सारे स्टूडेंट्स में। कुछ बच्चों पूछना तो नहीं डॉक्टर मीनू जी से? नहीं तो इनको ऋषिकेश में ही भेज देंगे आपके पास थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पास बहुत अच्छा आयुष डिपार्टमेंट है। हाँ। और उससे हमें बहुत ही आवश्यकता है वहाँ पे इन बच्चों की। आपका बड़ा आयुष तो आपने बोल ही दिया। मैं डॉक्टर तो हुई और प्रोफेसर भी बना दिया आपने मुझे आज। हाँ जी, हाँ जी। आपने मुझे जो है मेरा पदोन्नति कर दिया इन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। सो आई लॉग ऑफ। जी, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Now let's enlighten our minds on the role of Ayurveda from the perspective of immunonutrition in cancer through this enriching talk, Role of Immunonutrients in Cancer Patients, Ayurvedic Contribution and Research, presented by Professor Dr. Major M.D. Ray. Dr. Ray is presently the professor. Now, so I am very much safe right now. So respected Babaji, Shraddha, Sri Ramdev, Swamiji, and respected senior teachers, professors, my colleague and friends. My topic is simple, Ayurvedic contribution and research. We are talking today, and all senior teachers already talked about that. And my objective, my goal, agenda is this. Short, being a cancer surgeon, I'll talk about what is cancer, what are the cancer incidence in India. Already talked, I'll just say a few words only. And cancer, causes of cancer, Indian patient scenario in nutritional perspective, and role of immunonutrient in cancer patient, Ayurvedic contribution and research, and AIMS perspective with the Patanjali Research Institution, with the collaboration, and immunonutrients of life. In our life, what is the role of immunonutrient? What are the immunonutrients? And thereby the concrete decision, concrete one decision will take. So that causes of cancer, he already mentioned, Professor Srivastava sir. So any kind of chronic irritation make cancer. You have to one understand any kind of chronic irritation. Everybody knows about the physical irritation, but I always emphasize, being a surgeon also, the chronic irritation, mental irritation also causes cancer. He mentioned already that most of the people in the present age under the stress for the exam, for the competitive life, for anywhere, everywhere the stress is there. And the stress may lead to cancer also because they mutate our DNA, and which causes the cancer. So not only physical, the chronic irritation, mental irritation also causes cancer. That is very important aspect we should know. Apart from the, we know tobacco related product, 40% responsible for cancer. Lifestyle, diet also 30% responsible for cancer, and other causes he already mentioned regarding the infection, mentally sporadic causes also there. Few causes we don't know what happens, why it happens. So these are the common cancers in India, but I will say that 25 lakhs people at a time in India having the cancer, they are the cancer survival, and regularly, day by day,
yearly 5 to 6 lakhs people dying, means per day 1300 to 1400 people dying because of cancer. But one important thing I'll just make sure that cancer is a curable disease and preventable disease. Why? Because 80% cancer we can prevent, and early stage cancer also curable if it is detected early. So there are very much warning signs are there in cancer. You also all should know about that. Suppose say there is a sore and sometimes the ulcer in the mouth for persisting for more than 2 weeks. There is a nagging cough also, chronic persistent cough also there. There is indigestion, bowel bladder habit changes. There are the natural surface or natural orifices bleedings are there. Or even if you feel some unwanted weight loss and there is any lump in the body. These are the more or less warning signs of the cancer. But these are the cancer caches in Indian people. If you see, if you consider into the Western country, if you see, the Western country that Sir mentioned is 59% people are obese people. But here in see the cancer people in our country, they're all cachexics and they're totally muscle. You can see you can count all the bones in their body. So there are different kinds of mechanism are there in the cancer. But see, recently I operated one patient and he is the huge lump in the body and his body, all the bones I can count down like this. So this kind of cancer patient is there. I operated recently and so huge lump and she was roaming around here and there. Ultimately she came to me only. I operated this and this kind of huge lump. You can see this around 18 kilo weight is there. But this is Indian scenario that is quite possible. But this is also one kidney lump is there. You can notice this. And so the stage 4 cancer at present, believe that this thing, what are the advantage of the science and technology? Stage 4 cancer also curable. Initially it used to be say, घर में जाओ थोड़ा सेवा कर दो ठीक हो जाए उसे जितना दिन जिए प्रभु को नाम ले लो. But still the date with the advance of the technique, these cancer are curable. I am doing that thing. I am looking after that. And extensive disease cancer I am removing from the body and giving the chemotherapy inside the peritoneal cavity. That is called HIPEC. So that treatment is there. So this is the HIPEC setting is there, all these things. But the question, this is my team. I always believe in the teamwork. And this is my team here. This is the HIPEC machine, which you put the chemotherapy with the temperature. So what happens particularly in we are talking about the data. Without evidence, nobody will believe you because we are living in the era of the science. And that is, everybody is believing the science. Nobody believes like this, Bhagavan ek hote, aajkal koi believe nahi hote, even particularly the present age. So we need the data. When this data shows, there are good survival is there, and this significant survival related there. Even the stage 4 cancer, I mentioned all that. And if you do this complete cytoactive surgery, complete removal of the tumor, give the chemotherapy inside the abdominal cavity, but patient will survive much more better, and that is significant. But the question is there, most of the data from the Western country and their patient scenario altogether different. My patient scenario is altogether different. So I see, even you can believe like this, I operated one patient and the same kind of patient, and that patient got discharged after 97 days. So I counted why this kind of patient, that time we are talking about that thing, whom to select the patient, particularly in AIMS, Delhi, where we have no selection this thing, because all patients coming for the last hope. So we have to do the surgery, like we have to take the final decision. So that the selection is very, very much limited to us. So, but I feel what is the problem with that? Because we should prepare the patient very nicely. That's why the concept of immunonutrient is coming, which is very much lack, or which is available with us, that is very much costly. I am talking about this paper recently published in Annals of Surgical Oncology, and that role of immunonutrient is this kind of patient when the stage 4 disease, when the advanced disease, the role of immunonutrient is there. Immunity nutrient is very much important thing is there. So they have mentioned also the less hospital stay, less infection, all the positive post-operative, less complications, all the things are there with the immunonutrient. Now we are talking with this thing, they have forgotten the principle of Ayurvedic medicine, which already everybody is talking about that. We all know that is the oldest tradition of the medicine. One, we have just forgotten about that. Because if you know, nowadays the children never bother about the listening to the parents. So that creates the ultimately problems. So we have forgotten the parents. That's why most probably we are facing the problems. I believe like this way. So that's why there are basic principles of there in Ayurveda. We all know about this. We discuss about that. So plant-based drug and adjuvant to cancer chemotherapy, she mentioned also Ma'am Minu Singh, also Professor Chintamani. There are so many drugs are there like praglitexel, vinclystin, vinblastins. This is originated from the plants. So this is, we should not forget that the origin of the many drugs from the plants also.
So these are the commercially available immunonutrients. If you see that immunonutrients, what are available, the cost is how much? Suppose our poor patients are there, they are hand to mouth and cost is part of one sachet or injection is 4,700. So just you calculate 1 month before surgery, you have to give for 14 days, after surgery 14 days. So around 10-12 lakhs to the only the immunonutrient, only the immunonutrient for this kind of patient to prepare for the surgery. So just you believe like this way. And what happens, but the other also, that all costly, what are the preparation available in the market. But what Baba did, the miracle, you know, this thing, cystogrid is there, so that has got the multiple composition, all this, and that is also immunity. We started this immunonutrient to our patients. Already Dr. Anurag and we just collaborated with this. We will use our patient for the immunonutrient in the Dibba cystogrid diamond capsule. So that is the main important, the Dibba cystogrid capsule, that we will see the same thing in the patient which is used in the normal medicine we are using for the immunonutrient to the patients. So that is the history of Ayurveda. All know that is the old days, that is 2nd century BC that started, and gradually this based on this thing, air, water and all related to our lives, war, water, space, earth, all this and fire. So these are all related to our life and we are made of that only. So we have to remember this. And the role of Patanjali Research Institution, I see still like is something to discover like this. I always believe scientific way, and still we don't know the active, what is the constituent. There are many constituents there in the Ayurvedic medicine, which is the active constituents and which is the mechanism of action of this drug. If we discover like this way, I think that will be accepted throughout the world without any doubt, without any confusion. So that is, and Patanjali is the one institution single-handedly they are doing this job. So that is a great job, no doubt about this. So that is our plan. At present, we are doing this, making the 50-50 patient. We will see in the same kind of advanced disease patient, we will give one hand with a normal immunonutrient or commercially, whatever the available, we are protein powder, all things. Another hand, we will give the cystogrid, and we will see the 100 patient, what is the result of that. So Anurag is very much keen to that, and I must say, I just must thankful to him, and he's a very charming personality, no doubt about that, to convince others. So no doubt about that. So I have seen the mission and vision of this thing. What I got impressed, you know, because one thing I just noticed, one vision is very important vision is there. They want to do the evidence-based medicine, evidence-based practice. So that is very important word, which I got attracted on that word only. Because they also try to not like this, Baba says, dawai tumhara theek ho jayega, that is not there. They are also trying to prove that it has got the value. So that I just most really, that is commendable job in that in the vision they mention. And now I'll talk few minutes about that. That is my passion. I'll talk about immunonutrients of life, which I have learned lot of things from the Babaji. What you know? Because I know what is the life exactly. Because you see his life is nothing in between that BCG and ECG. When you born, somebody put the BCG, you don't about that thing, even don't cry also like that way. And ultimately that flat ECG is there. So life is end of that. So in between, if you see the B is the birth and D is the death. What in between? That is the C, that is the choice. That is in our hand, you know, that we can choose our life. So that I believe, and if you say the Macbeth, Shakespeare, that kind, the word Macbeth says what's about the life. He says, I clearly remember the life, tomorrow and tomorrow, Christian this PT paste from day to day to the last syllable of our recorded time. All our studies have lighted fools to the way of dusty death. Out brief candles, life's but a walking shadow. The poor player that starts and fades his hour upon the head, upon the stage, then is heard no more. Like Mera role is there only 30 minutes, then I have to go down like this. So that we are playing we are performing the drama in this stage, and we have to go again like this. So we are responsible for our life, because the human nature is there to blame others, but I think that you must blame to yourself why you are unable to do that. So that we are responsible for our life. So what is the purpose of life then? Our purpose of life to only achieve happiness, only achieve the peace, only achieve the happiness. So that is the purpose of life. But how to achieve this? So my concept is there. What I notice here, everything is there. I believe personally very strongly that the first and foremost thing is exercise and yoga. Second thing is the meditation. Third is the quality of work and acquiring of the knowledge. All the three things are here. I can't believe like this. Someone, some society or some organization is following this path, whichever I learned very strongly from him. And I definitely, I'll say, just practice these things, three things every day, and within a month you see the changes in life. So that from the Baba, I can see everybody saying the Baba is not only doing this abdominal job, he's doing the great job. If you know, there is no excuse is there that you cannot do the exercise regularly. So our exercise is like inhaling oxygen. You believe me, that is like inhaling oxygen. That is so much important for our body. And exercise is a celebration of what the body can do.
so that you can do the exercise regularly and yoga. That is my appeal also to you on behalf of Baba. So that is this thing, the importance of yoga meditation. If you, as a doctor, I can ensure you that there is no physical and mental health should be there. So there, without having exercise you have. Even in my 50 years of age, God bless, not a single day I fall in sick like this. I believe in that very particularly. I can guarantee you that you can prevent you can control your mind, you can control your body only if you keep doing regular exercise and meditation and study. These things are very important in life. I believe regularly. And Baba, these are the yoga, simple yoga I have learned. So my is very much fond of doing yoga. I am not, but I am doing exercise regularly. No, is that. So that is the role of meditation. You know, everybody believe that our mind is a beautiful garden and our thought process is the seed. From the same garden, you can get the flowers or the weeds. That depends on you. All games, all mind games. So you have to believe that. Because all is the mind. Mind is the controller. If you are unable to control your mind, you believe me, the mind will control you. So no doubt about that. And that's, we learn so many things from the Baba, how he is doing the meditation either. Just see this. So that is the acquiring knowledge also important. Knowledge will bring you the opportunity to make the difference. Only the knowledge make the difference, you know, because I feel like this way, I am standing here because of the knowledge. So everybody, if you have the knowledge, everybody, everywhere you will be, everybody will be worshipped. Because you know that Sanskrit slok is there, Vidyatancha Nepatancha Naivatullam Kadachana Sadeshe Pujjate Raja Vidyan Sarvatra Pujjate. So you believe me that and you keep doing this study and acquiring knowledge. So that I know, this is towards my last side, I know that what I learned from the Baba, you know, our life evolves in the 5 things. You know, just think about that. One is the physical quotient, one is the emotional quotient, one is intelligent quotient, one is the social quotient, and I put the vehicle, you know, the stepney is the economical quotient, which is the support to us. Any wheel is damaged, any wheel is just punctured, then you can put this thing. So if somebody does regularly that, I believe in exercise, meditation and study and good quality work, their steering of the vehicle will be their hand, and they, as per their speed, as per their willing and wish, they can speed and they can move their life without any doubt. So I believe that ultimately the work is joy. In Rabindranath Tagore, Einstein, everybody says that only the work can give substance to life. If you do the good quality work, that will really, you can enjoy the life. Without that, you cannot make anybody happy. Anybody, if you want to do also everybody happy, you can't do. But only one thing you can rest assured, that quality of work can give the substance to life without any doubt, one single doubt like this. So whatever we want, we can get it. So you see the law of attraction, the secret book, you also see the movie. They say when you truly want something and go after it without limiting yourself or disbelief, the universe will make it happen. I believe it very strongly, very firmly. Really, if you do this and if you go after it without limiting yourself, I think definitely you will get it, no doubt about that. So, and ultimately what is life? This is my nice quotation, I like it very much. So life is like a flute, you know, it may have many holes, emptiness, but if you work it carefully, it can play a magical melody. No doubt about this. So we think about that, our life is like this only, that's a hollow, but we can do, it can play a magical melody. So what makes you different, makes you beautiful, without any doubt. So thank you very much for the patient hearing, and thanks everybody for the listening. Thank you very much. आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया लास्ट में. बांसुरी आपकी भी बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब. कहाँ आर्मी से और कहाँ एम्स तक, और अब जो है आगे की यात्रा आपकी सतत चल रही है. एक बार डॉक्टर एमडी रे के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है. बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और बहुत पैशन के साथ इस अपने काम में, अपनी रिसर्च में, अपने गोल में लगे. नेक्स्ट. Thank you, sir. Now I would like to invite Professor Vikram Surya Prakash Kotaji to give his talk on the development of medicinal herb and their derivatives for cancer. Professor Gota is currently officer in charge at the Department of Clinical Pharmacology based in Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer, Tata Memorial Center, Navi Mumbai. He has obtained his MD Pharmacology from Christian Medical College, Vellore, and postgraduate diploma in clinical trials from prestigious London College School of Hygiene and Tropical Medicines, University of London. Sir, it's a pleasure to have you. Please.
Thank you very much for your kind introduction, and it's a pleasure to be here. My second visit to Haridwar, and enjoying the first time, enjoying it now. Pranam Babaji, thanks for your kind invitation, and also to Dr. Anurag Vashni. Okay, so I'm going to talk to you this afternoon about development of herbal drugs for cancer, and this is the Tata Memorial Center experience, whatever we are doing at this point in time. And I would like to broadly classify the development under three headings. So one is the development of herbal extracts, where we're working on Vidania somnifera extract, Inospora cordifolia, and so on. And then the next is pure compounds, where we're working on resveratrol, curcumin, and juglone. And we also are working on semisynthetic derivatives of natural compounds, like chlorophyllin, which is derived from chlorophyll, and metocurcumin, which is derived from curcumin. Okay, so first of all, the Vidania somnifera story, because this is very close to my heart. But of course, I spoke about this last time also, so I think the crowd is more or less the same. So I will quickly run through this, so we can concentrate on other development work as well. So Vidania somnifera extract for the prevention of graft versus host disease. So basically, graft versus host disease is a complication of allogenic bone marrow transplantation. So when I say allogenic bone marrow transplantation, so you have a sick patient who is suffering from leukemia or thalassemia or something, and then you kind of ablate the marrow with giving high dose chemotherapy or radiation, and then you salvage the person by transplanting a marrow from a different person. So that is called as allogenic transplantation. But the problem with allogenic transplantation is the donor T cells, which are the T cells coming from the person who is donating the marrow, can actually attack the host tissues, and that can result in a condition called graft versus host disease. Once again, an immunological phenomena. And the graft versus host disease is commonly seen, manifests in skin, liver, intestines, lung, and these are the four primary organs where the graft versus host disease generally manifests, and the intestines, of course. So 5 organs. So this is a major problem of bone marrow transplantation, because there is a 30% transplant-related mortality associated with graft versus host disease. And some of the treatments that are available are not always successful. Like we have immunomodulators like mycophenolate mofetil, cyclosporin A, a combination of those drugs and so on. But the prophylaxis are not always successful. And despite standard prophylaxis, we have 25 to 30% mortality. So this is a schema of allogenic stem cell transplantation. So what we did was we started working on a mouse model of graft versus host disease. Using the same principles, we have C57 black mice, which is the donor, which expresses an antigen called H2KB, and we have a white mice, which is the Balbsi mice, which has an antigen called H2KD. So between the B and D, there is a mismatch. And when you transplant a white mouse with a marrow from the black mice, they will invariably develop graft versus host disease. So that is the model. And if you look at it, when you develop this model, all the animals, I have a pointer. Yeah. I'm not sure it's pointing. Yeah, right. This one? Okay. So if you see, all the animals will die by day 22. Okay, with this model, and this is the manifestation of the model. So you can see diarrhea, copious amount of diarrhea. You can see changes in the skin, such as ruffling and denudation, and so on. And what we did was we treated these mice with prophylactically with Vidafarin before doing the transplantation, and this is how clean the animals treated with Vidafarin look. And this is the clinical score of graft versus host disease. The control animals which are not treated with Vidafarin will have very bad clinical manifestation in the form of diarrhea and skin denudation, and then the body posture will become kind of crumpled like this, and they will lose weight loss, and so on. And the higher the score, the worse is the manifestation of GVHD, and Vidafarin could actually reverse it. And if you look at the survival, Vidafarin offered a definite survival advantage. So mice in the Vidafarin treatment group were not dying. And this is the
histology of the target organs, as I mentioned, the target organs are liver, skin, small intestine, colon, and lung. And you can see that, this, if you look at day 14, this is day 7 and day 14. So if you look at day 14, you'll see a lot of inflammatory changes in liver and colon, lung, and so on. You'll see a lot of ulceration of the skin, okay? And you will observe loss of crypt in the small intestines. All these things are mitigated in the presence of Vitafurin A. So, and this is the inflammatory response to graft versus host disease. And you can see that all the inflammatory cytokines are going up in the presence, in the absence of Vitafurin A. And Vitafurin could actually reduce the inflammatory cytokines. And the impact of Vitafurin is highest on day 14, where most of the inflammatory cytokines are less. And you'll see that IL-10 is an anti-inflammatory cytokine, which is going up in the presence of Vitafurin A. So now that we wanted to do a systematic development of Vitafurin, so we have done acute and chronic toxicity studies as per the OECD guidelines, and it is very simple. I mean, you take animals and dose them at these 3 doses for the acute tox study, wherein you give 1 dose and follow the animal for 14 days. And repeat dose toxicity, you give 3 doses. One is the dose at which is clinically having clinical efficacy, and then the other 2 are the higher doses. And here we observed the animal for 28 days, and then at the end of 28 days we have sacrificed and we have done the safety evaluation in the form of lung function, the renal function, liver function, histopathology, and so on. And what we established the maximum tolerated, so we did not actually find much toxicity. So even at 2000 milligram per kg, which is called as the limit dose, we did not find any toxicity at all in the acute tox study. And in the chronic tox study, the no observed adverse effect level was found to be more than 500, which suggests that it is a very, very safe drug. And pharmacokinetics also was done, and we could see that the formulation that we were administering orally was getting absorbed, and we were getting good concentration. Albeit the actual oral bioavailability was about 2%. So later on, we evaluated we tested the mechanisms of action, and it has a very pleiotropic activity. So it affects the JAK2 STAT3 pathway, and JAK2 STAT3 pathway is known for inflammatory processes, and it also mediates it also inhibits the NF-kappa B pathway, which is once again pro-inflammatory, and the AKT-mTOR. So the consequence of all the inhibition of all these pathways, you will see that there is inhibition of cytokines, which is one of, and there is inhibition of the proliferation of T cells is also under control, and the cytokine storm is averted. And these are the primary reasons why GVHD manifests. Okay. So earlier we had conducted a phase 1 clinical trial. See, I mean, in a sense, the reason why I'm talking about all these things is we are trying to do a systematic approach. I mean, one might argue that Vitafurin A is a very safe drug. We may not have to do these extensive investigations. And Dr. Gupta also brought up this point in the morning. But some of the indications that we are planning to develop this drug for requires some kind of a systematic investigation, because these are not otherwise tested in these indications that I'm talking about. So we did a phase 1 clinical trial of Vidania somnifera extract some time ago. That was almost a decade ago, and we found that it is relatively well tolerated up to a Vitafurin A dose of 216 milligrams per day, which once again showed that it is extremely well tolerated. And over the last 7 years, we have had so many publications, establishing the mechanism of action of Vitafurin A, and also establishing the safety of Vitafurin A in mice, and also safety of Vitafurin A in humans. And consequently, what this has led to is a phase 2 clinical trial in patients undergoing bone marrow transplantation. And we have designed 2 studies here, because what I showed you the data of was for the prophylaxis of graft versus host disease, but we also have data for the treatment of graft versus host disease, which I discussed in the previous meeting. Therefore, I didn't bring it up here. And therefore, we have planned these 2 phase 2 clinical trials, both for prophylaxis as well as treatment of steroid refractory. So one of the important drugs that is used once a patient develops GVHD despite
prophylaxis is corticosteroids. And if they fail on corticosteroids, we don't have too many drugs. The most recent FDA-approved drug is ruxolitinib, which costs about 3 lakh rupees per month. So less than 1% of our patients can actually avoid it. So we are trying to position midofulin A for the treatment of steroid refractory GVHD, as well as for the prevention of graft versus host disease. And these two trials have been submitted to the ethics committee for approval. So on similar lines, we are also investigating one more for the prevention of graft versus host disease. And this is derived, obtained from a fruit called walnut. And all of us know, walnut. It is obtained from walnut. And the principle of GVHD is the same, so I'm not going to talk about that. And as part of the development process, we concluded the acute and chronic toxicity study. And this toxicity study was conducted slightly differently because we used a slightly sophisticated statistical modeling for evaluating the acute and chronic tox. And that is called as the benchmark dose modeling. And benchmark dose modeling is basically, it relies upon, it's some kind of a regression which relies upon finding a point of departure. So point of departure is the concentration of the dose at which the concentration increases disproportionately. So we did this benchmark dose modeling, and we found out that with the acute dose of a single dose, a dose of 118 milligram per kg. So you must appreciate that we have not tested 118 milligrams here. We have tested doses like 50, 300 and 2000. But based on the mortality that we have observed, we have found that a dose of 118 milligram per kg is found to be well tolerated without any mortality. And when we did the histopathology, we found that it causes extensive degeneration in cells at almost all the doses, in the liver and kidneys at almost all the doses that we tested, except that the 50 milligram dose was comparable to the vehicle control. So this established the acute toxicity of naftoquinone. And likewise, we also did the chronic repeat dose toxicity, 28-day toxicity. And once again, we found that there were a lot of mortalities with higher dose levels, and here we chose dose levels of 5, 15, and 50 milligrams based on the acute tox. And we observed that 5 milligram was the only one which was tolerated without any mortality. So once again, the fact I want to emphasize here is that not all plant products are safe. I mean, in the sense, it is a myth that anything that is obtained from plants is safe. Of course, we must understand that these are pure chemicals that we are dealing with, not as an extract. But still, one must always be suspicious that plants can have their own toxicities. So it is necessary to do some systematic development wherever the data do not exist. And this certainly underscores that fact, because in an acute tox, 118 milligram per kg was found to be a safe dose, but in chronic dose, it comes down to 1.74 milligram per kg. So on repeat administration, this was found to be very, very toxic. Okay, and this is a histopathology of these repeat dose toxicities carried on day 28. And we could establish the point of departure. There is a point at which the toxicity increases disproportionately. And for acute tox, it was 118. For repeat dose, it was 1.78. And serum AST, a transaminase, was found to be very, very sensitive for toxicity of naftoquinone. And because this is a very novel statistical method for acute and chronic toxicity studies, we could establish that this method can actually be applied for toxicity evaluation of drugs. And the third one, the next compound that I would want to talk about is chlorophyllin. And as I said, it is a chemical derivative of chlorophyll. Basically, the magnesium, which is at the center of chlorophyll, is replaced with copper, and a sodium salt of that compound is made, and that's why it's called as sodium copper chlorophyllin. And what we found was that so there is a lot of need for radioprotectors in cancer. So radioprotection is something like when you have cancer of oral cavity, or any pelvic tumors, or in the rectum, or anywhere in the abdomen, when you give, or even brain tumors for that matter, when you give radiotherapy, the surrounding normal tissue also will get exposed to radiation, and that will lead to a lot of toxicities. So you need good drugs that can protect against the harmful effects of radiation to the normal tissue. And this is an unmet medical need. The only approved drug by FDA is a drug called amifostin.
And more recently, palifermin has now also been approved as a radioprotector, but they are not universal radioprotector. And both these drugs are approved only for the prevention of radiation toxicity of the head and neck radiation alone, but not for other parts of the body. So there is an unmet medical need. So we started working with the Bhabha Atomic Research Center, and we developed this chlorophyllin. And here you can see that this is the mortality that is caused due to radiation. And in the presence of chlorophyllin, chlorophyllin could protect the animals against supralethal doses of radiation. And when we examined the intestines, you can see very clearly that in the presence of chlorophyllin, the villus architecture is extremely well maintained. And you can see here the length of the villi. So in the absence of chlorophyllin, just by giving whole body radiation, villi length shrinks. That is because the radiation causes so much damage to the villi in the intestine. But in the presence of chlorophyllin, the villi length is maintained. And similar findings were also found in the lung, whereas where in the control, in the absence of chlorophyllin, at 4-gray radiation, you can see complete destruction of the alveolar architecture, which was maintained in the presence of chlorophyllin. And what we also observed was chlorophyllin does not protect the lung cancer itself. Because if a radioprotector protects the cancer, then the purpose is lost. So it should have a dual effect. It should protect the normal tissue. It should not protect the cancer cells. And we observed that kind of a phenomena wherein it was not protecting the lung cancer. We explored the mechanism of action. We found that chlorophyllin induces what is called as mitotic catastrophe in tumors, and that is the reason why tumor cells get killed. And in fact, it synergizes with radiation as far as tumors is concerned. But in normal tissue, it is protective. And we got a patent of chlorophyllin as a radioprotector. And we did a regulatory, so we are developing this as a phytochemical. So with the permission of the regulatory agencies, the DCGA, we did a phase 1 clinical trial in healthy human volunteers. And we established, this is a schema of the phase 1 trial. We established the safety of chlorophyllin up to 3 grams per day. But pharmacokinetic studies also suggested that even if you use 750 milligrams once a day on empty stomach, you can achieve sufficient concentration that is required for radioprotection. And therefore, all our phase 2 trials now is being planned with 750 milligrams once a day of chlorophyllin. So this, there is a lot of effort that has gone in, even establishing what concentration is required for radioprotection, what is the pharmacokinetics, and we could also establish that, the absorption decreases by 80% in the presence of food. Because when we did this study, we did both fed and fasting studies, and therefore we established that, chlorophyllin has to be administered on empty stomach only. So there's a lot of systematic, development that is happening, and if I can give one take-home message for all of you, it is that if there is a systematic development, I have a better chance of developing a good compound that can be of clinical utility going forward. Okay, and then this is meeting with the industry partner who is making the formulation, and this is where the technology was transferred between Department of Atomic Energy and IDRS Labs, which is a Bangalore-based company. And moving forward, we have also done a lot of toxicity studies for herbomineral metallic compounds for one of the Ayurvedic centers, which is based at Pune in Vagoli. And I won't go into details, but these are the 4 herbomineral formulations. These are the 4 herbomineral formulations that we worked on. Okay, and so the reason why we had to work on it is because they were interested in doing clinical trials of these, because they have been using these products for a long time in their hospital, and they found that it can be used for triple-negative breast cancer. And I think one of the speakers in the morning emphasized the need for developing drugs for triple-negative breast cancer because it is an unmet need. There are not too many drugs available for TNBC. Okay. Okay. So there are not too many drugs available for triple-negative breast cancer. So when the doctors from this Ayurvedic hospital in Pune approached us, our breast cancer physician, breast oncologist said, I cannot use any of this unless I have safety data from animals. And that is the reason why they approached us to do safety studies in mice. And we concluded that these herbomineral formulations were very safe, even up to a dose of 2000 milligram per kg.
and there were no histological changes observed with the administration of these Ayurvedic formulations over and above the picture that was observed in the vehicle control. So we established the safety of these herbal drugs, both with acute and repeat dose toxicity studies. And now the breast cancer physician oncologist is ready to launch these products for phase 2 clinical trial in breast cancer. Okay, so coming to switching gears, I would now like to focus only on some of the products that are undergoing clinical trials at this point in time, after a lot of non-clinical development work has been concluded. And this pertains to a drug called resveratrol copper. So there was a lot of research which showed that resveratrol copper can be used to mitigate the toxicities associated with chemotherapy. So we did a study in patients of gastric cancer who are being treated with docetaxel-based chemotherapy. And docetaxel is one chemotherapy which is notorious for causing a lot of toxicities, both hematological and non-hematological. And we could clearly establish that if you give docetaxel in the presence of resveratrol copper, which is the formulation that has been tried and tested in our laboratories, this study suggested that you can actually minimize the non-hematological toxicities associated with docetaxel. In fact, if you look at the hand-foot syndrome, which is one of the major complications of this combination chemotherapy for gastric cancer, the incidence of hand-foot syndrome was significantly less in patients who were treated with resveratrol copper as compared to the control group which did not receive resveratrol copper. This was a phase 2 clinical trial. And likewise, with resveratrol, we also did another phase 2 clinical trial in patients undergoing bone marrow transplantation. Here, once again, the idea is bone marrow transplantation uses high-dose chemotherapy, high-dose melphalan. I told you that you have to actually ablate the marrow. Ablate the marrow means you have to completely make the marrow devoid of any cells, so that when you infuse the donor cells, the donor cell can actually go in and home into the marrow. So, and because you use such high-dose chemotherapy for ablation, what happens is a lot of them will suffer from various toxicities, especially mucositis, and then dysphagia. Dysphagia is they're not able to swallow, and then they will require total parenteral nutrition. Total parenteral nutrition is the nutrition has to be administered through intravenous route, and then they will have severe pain, and so on. And when you look at this, the incidence of mucositis actually reduced considerably in the presence of in patients who were getting resveratrol copper as against those who did not get resveratrol copper. And subsequently, there was also a reduction in the number of patients who required total parenteral nutrition as well as pain medication. And likewise, we have a similar study of curcumin being done in the same setting. Actually, I'll come to that in a minute. So, so once again, talking about systematic development, we did a phase 1 clinical trial of a solid lipid curcumin particle, because curcumin, all of us know, one of the major problems with curcumin is the lack of bioavailability. So one of our industry partners, they developed a solid lipid curcumin particle, and we could demonstrate that if you use solid lipid curcumin particle, both in healthy volunteer, on the left hand side you have the healthy volunteer data, and on the right hand side, we have patients with osteosarcoma who were administered varying doses of curcumin. We could demonstrate that the bioavailability of curcumin was indeed very good when it was formulated in the form of solid lipid curcumin particle. So we made lozenges of the same curcumin, and we tried it for the same indication, that is mucositis due to bone marrow transplantation. And we published our work recently in a journal called Cell Transplantation. And what we showed was curcumin could reduce the toxicities associated with mucosal injury following high-dose conditioning for autologous transplantation. And so more importantly, we could see that there was a reduction in the incidence of mucositis and so on. But the most important advantage was observed in the decrement in the need for parenteral nutrition and also the incidence of vomiting. So these are some of the toxicities which are very debilitating when it comes to high-dose chemo conditioning. So that's about it. And I think I'll skip the other trials, because so based on this phase 2 data, we are now doing a phase 3 clinical trial.
and we require a huge sample size of 170. We have enrolled 52 patients, and the trial is ongoing. This is a double-blind placebo-controlled trial, wherein one arm will get curcumin, and the other arm will not get curcumin, and they'll be randomized. Okay, and once again, some of the a few speakers in the morning mentioned how important randomized control trials are in terms of generating evidence. So that is called as the gold standard for evidence in medicine. So we are doing a phase 3 randomized control trial. So I'll skip these things, and finally I'll go to the future directions. So development of anti-cancer drugs and adjuncts in collaboration with the Patanjali Research Institute is what we actually look forward to. And I'm happy to tell you that, Dr. Anulom-Vilom visited our center a few months ago, and there was a very good dialogue that happened between him, his team, and our directors. And we all agreed that, we should work in collaboration and develop products together. And one of the important drug, Renograte, we'll be very happy to kind of launch a clinical trial if things work out, because cisplatin and any other chemotherapy which is used for cancer have a high chance of causing nephrotoxicity. And Dr. Vashni shared very good data from his laboratory, which showed that Renograte can actually prevent nephrotoxicity due to drugs like vancomycin and cisplatin. So we are very keen to launch that trial at our center, and we are in talks with him. And going forward, we want to get a complete mechanistic understanding of herbal drugs using various omics platform. And effects of herbs and herbomineral compounds on the gut microbiome is another aspect of our interest, because a lot of good work is going on in gut microbiome recently, and its association with the overall immunity of an individual. So we all understand how important immunity is. So this is going to be our next area of focus, that is gut microbiome and immunity. And we are also coming up with an integrative center for treatment, research, and education in cancer, which is called as ICTREC. And this is a hospital with a difference, because for the first time we are going to have a hospital which will treat patients based on the principles of Ayurveda and allopathy. So, and when we establish that, when that hospital comes up in the next 2 or 3 years, it is important that we would have generated a lot of data, in collaboration with centers like Patanjali and like-minded people, so that when the hospital is actually up and about, we will have a lot of good treatments to offer. So with that, I would like to summarize my talk. Systematic development is, in my opinion, is the key for, even in the case of plant formulations and Ayurvedic drugs. And emphasis is on evaluation of toxicity, and that's why I stress a lot on non-clinical toxicity. And collaborations of like-minded centers is the need of the hour, and that's where I'm very thankful to Patanjali for coming forward to associate with us. Thank you very much. It must have been a long talk. I can take questions, but... Thank you very much, sir, for this enlightening lecture. Now we have Param Pujya Acharya ji connected with us from Doha Airport to give us his blessings. So we will be connected directly with him online. ठीक है, पूज्य आचार्य जी यहाँ बहुत बड़े बड़े महापुरुष योद्धा भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, और दिखते नहीं रहे। आचार्य जी अपनी शकल दिखाओ। हाँ, सब अपने कॉलेज के सारे बच्चे भी हैं। बहुत बहुत प्रणाम। ओहो, अवतरित तो हो गए ईरान से। ईरान में आपको बुर्का नहीं लगाना पड़ेगा, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। सर्वप्रथम आज इस अद्भुत पावन संगम में स्थूल रूप से उपस्थित न हो पाने का एक कहीं न कहीं मन में मलाल है। अच्छा होता हम आज आप सबके बीच में होते और
सारे आयोजन को, आप सबके विद्वत्तापूर्ण ढंग के उद्बोधन को हम सुन पाते, अनुभव कर पाते। म्यूट कैसे हो गए पूज्याचार्य? आप म्यूट हो गए। हाँ, अब वापस आ गई। प्रेरणा है, उनकी जो दिव्य सोच है, उस सोच को नमन वंदन करते हुए इस सब कार्यक्रम के जो सूत्रधार डॉक्टर अनुराग जी, जो अपने आप में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के निष्णात होते हुए भी वैदिक परंपरा संस्कृति के प्रति आपकी गहन निष्ठा है, आपकी अभिरुचि है। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वाई के गुप्ता जी, जो आयु वृद्धि के साथ साथ में ज्ञान वृद्धि है और हम सबको निर्देशित करने का एक महान कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ में इस पूरे प्रोग्राम में सभी सम्मानित सभी हमारे विद्वज्जन, चाहे वो आदरणीय प्रोफेसर चिंतामणि जी हों, चाहे प्रोफेसर डॉक्टर मेजर एमडी रे जी हों, चाहे आदरणीय प्रोफेसर विक्रम सूर्य प्रकाश गोटा जी हों, आदरणीय डॉक्टर सविता लोचक जी हैं, आदरणीय हमारे मीनू सिंह जी, और आदरणीय प्रोफेसर उमा कुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर भानु दुग्गल जी, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अमन गुप्ता जी, आदरणीय प्रोफेसर भगत सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव जी, और आदरणीय प्रोफेसर प्रेम खोसला जी, और आदरणीय प्रोफेसर देवाशीष विश्वास जी, और आदरणीय प्रोफेसर रोहित शर्मा जी सहित इन सब कार्यों को सूत्र रूप देने वाले हमारे पतंजलि संस्थान के सभी वरिष्ठ जन, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, जिन्होंने बहुत प्रयास करके इस आयोजन को इस रूप में लाने का जो महत् कार्य किया है। मैं और किन्हीं का विद्वज्जनों का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर हम अभी एयरपोर्ट में हैं। यहाँ पर भी आने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी संस्कृति, परंपरा और अपनी परंपरागत विधा को आधुनिक विज्ञान सम्मत यदि हम स्थापित कर पाते हैं तो देश ही नहीं पूरी दुनिया उसको स्वीकार करने के लिए, उसको मानने के लिए सर्वतमना तैयार है। तो यहाँ हम अभी ईरान के लिए प्रस्थान करते हुए यहाँ पर कतर में दोहा में अभी हम पहुंचे हैं। ये मध्य विश्राम समय पर मैं आप लोगों के सामने जुड़ करके वो कर रहा हूँ। तो डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी जो है ये इसके लिए बहुत समय से प्रयासरत थे और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर साहब की जो स्वप्न है आप सबको यहाँ देख करके, प्राचीन काल में भी हमारी ऋषि परंपरा रही है। ऋषि लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे, संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता था जिसके द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान होता था। उस आदान प्रदान से नए सृजन के रास्ते खुलते थे। तो आज भी पतंजलि योगपीठ परिवार में, परिसर में कुछ ऐसा ही होता हुआ, न केवल जहाँ पर जो उपस्थित आप सभी विद्वज्जन हैं, अभी तो वैश्विक स्तर पर हमको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इसको अनुभव करेगी, महसूस करेगी और पतंजलि के पवित्र प्रांगण से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आयुर्वेद का जो वैभव है आप सबके सहयोग से विश्वव्यापी बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करने का जो कार्य है वो आप लोगों के माध्यम से ही हो पाएगा। पतंजलि की जो दृष्टि और सोच है वहाँ समवेत रूप से, समग्रता के साथ में रोगी की चिकित्सा ही हमारा लक्ष्य है। प्राचीन काल में भी ऋषि लोगों ने कभी किसी भी चीज को लेकर के कोई आग्रह नहीं रखा था, अभी तो उनके मन में भी एक ही भाव था, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम। इसी भाव के साथ में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो रोगी हित को सर्वोपरि मानते हुए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं आप सभी विद्वज्जन, सभी प्रोफेसर्स गण अपने क्षेत्र के, आपने बहुत सारे नए आयाम, नए कीर्तिमान गढ़े हैं, आपने नई नई ऊंचाइयां अपने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। तो आप आधुनिक ऋषि से आज का यह जो संगम है, आज की यह संगोष्ठी है, मुझे लगता है कि आप सबको भी आधुनिक ऋषि से प्राचीन ऋषि बनने की ओर एक मार्ग को जो है यहाँ से प्रारंभ होता है। तो मैं आप सबको नमन करता हूँ, सभी आधुनिक ऋषियों को प्राचीन ऋषि बनने के लिए भी, उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी पतंजलि परिसर में
श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में, नेतृत्व में इस अभियान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप आ रहे हैं। भारतवर्ष से इतर यदि मैं देशों की बात करूं, बहुत सारे देशों में परंपरागत जो विधाएं हैं, उन विधाओं को जोड़ करके जो अनुसंधान करने की जो स्थिति है, भारत से कहीं बहुत आगे है। हमारी जो प्राचीन विधा में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत उसके अंदर गहराई, गांधीर्य है, चिकित्सा विज्ञान की तमाम समस्याओं का वहां पर समाधान है, परंतु अनुसंधान न होने की वजह से आज हम पूरे विश्व जनमानस के सामने उस तरह से सीना ठोक करके हम खड़े नहीं हो सकते हैं। तो उसको हमें पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़े होकर के अपनी बात को रखना और अपनी बात को हम लोगों तक पूरी डंके की चोट पर पहुंचा सकें, इसके लिए मात्र एक ही साधन है, वो है अनुसंधान का। अनुसंधान के अतिरिक्त कोई साधन और माध्यम नहीं है। और अनुसंधान के लिए मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह के आज मैं उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूं, आप सबकी भावनाओं को और संवेदनाओं को अनुभव कर रहा हूं, आपके उपस्थिति मात्र से यह आयुर्वेद की पुनर्स्थापना का महत्व जो बृहत्तर जो दायित्व है वह अवश्य पूर्ण होगा, हमें पूरा विश्वास है। और मैं एक और आप सबके सम्मुख एक वचन इस रूप में मैं चाहता हूं कि जो भी आप लोगों के द्वारा जो उद्बोधन या जो भी बातें, जो भी हमारे लिए प्रेरणाएं होंगी, तो उसको हम गहनता के साथ करेंगे, करके आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज का यह कार्यक्रम यह प्रारंभ है, तो इससे भी बृहत स्तर पर, व्यापक स्तर पर बड़ा कार्यक्रम, जहां पूरी दुनिया तक और ये जो आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो दृष्टि है, आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वह पहुंचे, उसके लिए बृहद आयोजन भी शीघ्र हो, ऐसी हमारी भावना है, संकल्पना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से उसको हम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आज साथ में न होने का कहीं ना कहीं मन में बहुत एक तरह से पीड़ा है, परंतु यहाँ पर भी आप ऐसा माने कि जिन मिशन के लिए, जिस अभियान के लिए आप सब पतंजलि की इस पवित्र प्रांगण में, इस परिसर में आप एकत्रित हुए हैं, उसी मिशन और उसी अभियान को किसी तरह से देश के बाहर दुनिया में गुंजायमान करने का एक स्वप्न, एक भावना और एक संकल्पना के साथ में हम यहाँ पर आज आए हैं। और उसी मिशन को एक कदम आगे बढ़ा करके मैं लौट पाया, तो मुझे लगेगा कि आप सबकी जो भावनाएं हैं, आप सबकी जो इच्छा है, आप सबके अंदर जो एक ज्वाला है, उस ज्वाला को एक दिया यहाँ पर प्रज्वलित करने का हमारा प्रयास सफल हो पाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पुनः मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वहां पर आप सबके उपस्थित होने पर भी मैं उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा मांगते हुए, श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, आप सभी पूज्य जनों के, वरिष्ठ जनों के, हमारे पतंजलि के अभिभावक जनों के और यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी हमारी पतंजलि की टीम है, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और सबको प्रणाम। ओम। ठीक है आचार्य श्री, आप आगे प्रस्थान कीजिए। यह सब महापुरुष जो है अपना ज्ञानामृत संप्रेषित करने के लिए सब पूरी तरह से आप्लावित हैं, अपने ज्ञानानुभूति से आगे बढ़ाओ जी। आयुर्वेद शिरोमणि श्री आचार्य जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद। Our heartfelt gratitude to Param Shraddha Acharya Ji Maharaj. Evidence-based approach through elucidating novel mechanisms can further aid in effective integration of Ayurveda and modern medicine to combat cancer. To address this further, may I now invite Dr. Savita Lochab Ji to deliver her talk on I apologize. There's a slight change. Okay. May I now invite Professor Bhanu Duggal onto the dais, please, to deliver her lecture on Bridging Ayurveda, Yoga, and Modern Medicine is the... I'm sorry. Apologies one more time. Okay. Ayurveda and cardiovascular system.
Professor Bhanu Duggal currently heads the Department of Cardiology, AIIMS Rishikesh. She was in past the head of Department of Cardiology at JJ Hospital, Mumbai. Professor Duggal has done her graduation and post-graduation from AIIMS, New Delhi. She did her specialization in cardiology from the prestigious Institute of Armed Forces Medical College, Pune. She has received Pediatric Cardiology Fellowship from London and Arun Imaging Fellowship from the United States. She is the recipient of Bharat Jyoti Award for the year 2008 stent prices under the Maharashtra State Health Insurance Scheme. She has written 6 books and more than 24 of research articles in different international journals. We welcome you, ma'am, here. Good afternoon, everyone. Shraddha Swami ji, namaskar. मेरे टीचर्स जो बैठे हैं, डॉक्टर वाई.के. गुप्ता, प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव, इनके अंडर मैंने MBBS अपना MD ट्रेनिंग किया था. एक्चुअली एक इमरजेंसी था, इसलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी के लिए रिक्वेस्ट किया. सो लेट आयुर्वेद टेक केयर ऑफ योर हार्ट. हम जब अपने क्लास में जाते हैं, फिजियोलॉजी की क्लास में, और मेडिसिन जब शुरू करते हैं, हमें दिखाते हैं ये हमारा फर्स्ट सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इंट्रोडक्शन होता है. विलियम हार्वी 17th सेंचुरी में ने डिस्कवर किया कि ब्लड वेसल्स होते हैं और एक आर्टरी होती है, एक वेन्स होती हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. पर हमें कभी बताया नहीं गया कि ये तो बात बहुत बहुत सेंचुरीज पहले हमारे चरक जी और सुश्रुत जी ने इसको डिस्कवर कर लिया था और बोला था कि धमनी या आर्टरी, उन्होंने डिफरेंशिएट किया था. एक आर्टरी होती है धमनी और एक वेन्स होती हैं सीरा, जिनकी आर्टीरियल वॉल थिक वेसल्स होते हैं, और एक वेन्स होती है जो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं. और हार्ट की इंपॉर्टेंस तभी से मालूम थी. 10 great vessels originate in the heart and are considered very important. ये हमारी 6 divisions of the body, internal organs, consciousness, motor, sensory organs को प्राण और वायु देते हैं. तो कितना कॉन्सेप्ट था जो कि हमें कभी बताया नहीं गया. ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का कुछ तो कहीं तो प्रॉब्लम है. संहिता, चरक और सुश्रुत ने बोला कि दे कैरी प्राण. प्राण मतलब ऑक्सीजन और रास, न्यूट्रिएंट्स टू द एंटायर बॉडी इन अ साइक्लिकल मैनर. उसमें उन्होंने ये भी बताया कि इसमें एक गति होती है, दिल में एक गति होती है, जो अब हम बोलते हैं कि नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, उसकी अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करती है कार्डियक मसल, जो आजकल हम स्टडी करते हैं. इसका एक सुनियोजित कार्यक्रम था कि हमें कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए एज अ कल्चर. आपको लगता होगा कि रोज आता है IIM में लड़ाई कर रहा है और बाबा रामदेव और कुछ आयुर्वेद और एलोपैथी में रोज झगड़ा होता रहता है, न्यूज़ में भी. वी आर वेरी एंटी आयुर्वेद, मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है. पर चाइना में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. उन्होंने कितने सालों से इंटीग्रेटेड मेडिसिन चल रही है, वहाँ कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं. क्योंकि मैकॉले जैसे ही मैकॉले आया, उसने देखा कि ये कितनी एडवांस्ड सोसाइटी है. हर विलेज में एक संस्कृत स्कूल होता था जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी. तो उसने कहा इसको कैसे ख़त्म किया जाए. उसने कहा भारत की शिक्षा को डिस्ट्रॉय करो. ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में तो भारतीय हो, परंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों में अंग्रेज हो. उसने एक क्लेरिक, जो अभी भी इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है. मैं आपको एक छोटा सा बात बताती हूँ. जब मैं UK में अपनी फेलोशिप कर रही थी, उसमें हम सब डॉक्टर्स बैठे हुए थे CCU के बाहर. तो एक चेकोस्लोवाकिया से था, एक रशिया से था, एक कोरिया से था. एक ने बोला मैं कोरियन में मेडिकल की पढ़ाई करता हूँ. जर्मन ने कहा मैं जर्मन में करता हूँ. रशियन ने कहा मैं रशियन में करता हूँ. मुझे समझ नहीं आया मैं अब क्या बोलूँ. तो मैंने ये बड़ा ऐसे बोला. मैंने कहा नहीं, हम 10th तक तो हिंदी में पढ़ाई करते हैं. ये नहीं समझ आ रहा था कि बच्चा आजकल पैदा होता है, माँ कहती है पानी मत बोलो, वाटर बोलो. ये तो हमारी हालत हो गई है. आप बॉम्बे में जाइए, आप बॉम्बे से हैं, यू गो टू CCI क्लब. अभी मोदी जी के कारण कभी कभी हिंदी भाषा बोलते, नहीं तो बाई के साथ माँ चल रही होती है और वो अपने बच्चे को बोलती है नहीं आप इंग्लिश में बात करो. सो आयुर्वेदा जो हमारा सिस्टम है बहुत प्राचीन है. इट्स अ साइंटिफिक सिस्टम जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया है.
एलोपैथिक इज़ अ वेरी न्यू सिस्टम, उसकी अपनी खूबियां हैं, इमरजेंसी की खूबियां, हमें दोनों को इंटीग्रेट करना है। डीजेनरेटिव डिजीजेज में आयुर्वेदा का एज है, बट इमरजेंसी सिस्टम में क्योंकि ये डिजीजेस थी नहीं जो एकदम हार्ट अटैक्स होते हैं, उसमें आपको ज़रूरत है अभी हमें मॉडर्न सिस्टम की, तो हमें दोनों को इंटीग्रेट करना है। प्रॉब्लम इंडिया में इसलिए आ रही है कि हमारा माइंडसेट बदल दिया गया है। अगर चाइना की तरह होता, अपनी लैंग्वेज होती, या मॉडर्न और अपना इंटीग्रेटेड सिस्टम लेके हमें कभी आसानी होती आगे चलने की। अब आयुर्वेद ने बहुत सारे ड्रग्स दिए हैं। एक है अर्जुना। एंशियंट इंडियन फिजिशियंस ने इसकी बार्क और इससे कई दवाइयों से इसका बहुत महत्वपूर्ण, मैं 2-3 ड्रग्स के बारे में बताऊंगी जिनका बहुत रोल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में। एंजाइना डिस्क्राइब किया था चरक ने, हृदशूल, एंड बोला था इसके फल, इसकी जो छाल है, इसको हमें ये यूजफुल है आयुर्वेद में, एंजाइना में, जो कि होती है कार्डियक पेन। फिर उसकी इतनी सारी स्टडीज हो चुकी है, ये शायद स्लाइड ठीक से नहीं है, बट उसका डायूरेसिस डिफाइंड है संहिता में, जिससे यूरिन बनता है जब पेशेंट हार्ट फेलियर में होता है। उसका रोल ब्लड प्रेशर में है। उसका रोल लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ब्लड प्रेशर होता है तो हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं, उनको डिक्रीज करने में रोल है। तो बहुत सारी स्टडीज है जो टर्मिनालिस अर्जुना पे रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स भी किए गए हैं। मैं अभी डॉक्टर वाई.के. गुप्ता ने जब मॉर्निंग में सुबह एक बहुत अच्छा बोला था कि हम मॉलिक्यूल के ऊपर, अभी हमें आयुर्वेद में कई ऐसे मेडिसिन हैं जो कई हजारों साल से चल रहे हैं, उसके लिए हमें मॉलिक्यूल की तरफ और मॉलिक्यूल बेंच टू बेड साइड जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही टेस्टेड है। इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। अगर आपने 5000 मरीज एक दवाई से ट्रीट किए तो उसका एक एविडेंस, पर उसको एक साइंटिफिक वे से हमें कलेक्ट करने की ज़रूरत है। और नॉर्मली क्या हो रहा है, वेस्टर्न मेडिसिन में दवाइयाँ नहीं है, 200 साल या अभी भी बन रही हैं, तो दवाई पहले बनती है लेबोरेटरी में, फिर उसका एनिमल ट्रायल होता है, फिर उसको ह्यूमन बींग्स में फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स करके फेज 4 में जाते हैं। फेज 1 में होता है सेफ्टी ट्रायल कि ड्रग सेफ है, तो कुछ पेशेंट्स को दिया जाता है। फिर फेज 2 में जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा ग्रुप लेके कि इसमें दवाई की एफिकेसी है, ये यूजफुल है। और फेज 3 होता है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद मार्केट करते हैं, और उसके बाद जब बहुत लोग यूज़ करते हैं तो उसको पोस्ट मार्केट सर्विलेंस या फेज 4 करते हैं। तो हम तो फेज 4 ट्रायल, शायद बहुत सारे जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं जो हज़ारों साल से चल रहे हैं, उनका फेज 4 ट्रायल ही हो चुका है। सो हमें अब ज़रूरत है उसको प्रेजेंट करने के लिए क्लिनिकली, क्योंकि हम इन मेडिसिन में विश्वास लाना चाहते हैं, उसको मॉडर्न वे ऑफ प्रेजेंटिंग मेडिसिन की तरह बात करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की तरफ जा सकते हैं दोनों का, या हम डेटा इस तरह कलेक्ट करें कि हमें रियल वर्ल्ड एविडेंस की तरह हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का जो आजकल सिस्टम शुरू हुआ है, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो हम इन दोनों को करके रियल वर्ल्ड एविडेंस एंड आरसीटी के लेवल पे ही जो ड्रग्स, जो दवाइयाँ बहुत सालों से चल रही हैं, उनमें हमें बेंच में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत मैं उसके आगे स्लाइड में बताती हूँ। जैसे सर्पगंधा, ये फर्स्ट ड्रग था, पहला ब्लड प्रेशर की मेडिसिन थी जो आयुर्वेद ने वर्ल्ड को दिया, फर्स्ट कार्डियक ड्रग था। तो जब रुस्तम जल वकील 1949 में लंदन से वापस आए तो उन्होंने इसका पेपर पब्लिश किया लैंसेट में, और तब पहला ड्रग दिया पूरी दुनिया को ब्लड प्रेशर का। ये आयुर्वेदिक ड्रग था, सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है। सो इसेंशियल हाइपरटेंशन नाड़ी मेथड से 10,000 बीसी में डिफाइंड है, और पल्स को नाड़ी शोध, जो नाड़ी ज्ञान होता है आयुर्वेद में, वो ब्लड प्रेशर को कब से डिफाइन कर रहा है। दूसरा ड्रग है गुगुल। गुगुल एक है गुगुलिपिड, इसकी बहुत स्टडीज हुई हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। वहाँ इन्होंने इसका देखा है कि ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी कम करता है, और इसका आरसीटी भी हुआ है। बट इसके आगे अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आयुर्वेद में, जिसको शायद अभी जैसे सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ। ये 2017 का आर्टिकल है, उसमें लिखा है गुगुलिपिड कॉजेज हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया लीडिंग टू एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, कॉजेज एथरोस्क्लेरोसिस। ऐसे आर्टिकल से
आयुर्वेद की बदनामी होती है। इसको पढ़ के गूगल लिपिड शायद हम कोई भी नहीं लेना चाहेंगे, बट मैंने फिर इसकी स्टडीज मेथडोलॉजी में जाके देखा। वो मेडिसिन कुछ कैप्सूल्स हैं जो यूएसए में ही बने थे। अब यूएसए में वो दवाई कैसे ली गई, उसकी प्रेपरेशन क्या है और उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है हमें मालूम नहीं है। वो वहाँ कहीं मार्केट होती है, एक लोकल फार्मेसी से ड्रग लेके ये ट्रायल किया गया है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, +1 में ये प्रेजेंट हुआ है। सो हमें क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, क्योंकि अब हम नई मेथड से ड्रग्स बना रहे हैं। आयुर्वेद में था कि आप लोकल अपने पत्ते लीजिए, इस समय लीजिए, उसकी बहुत टेक्निक्स है। हम उस टेक्निक से आगे जा रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इससे ऐसे आर्टिकल से बहुत बदनामी होती है। एक आर्टिकल ये सुबह डॉक्टर अनुराग वार्ष्णी ने दिखाया था कि गिलोय का काफ़ी ज़्यादा आया था कि इससे लिवर डैमेज हो रहा है। सो इसमें अभी डॉक्टर, हाँ जी, आपने काउंटर किया, बट अभी एक और चीज़, एक और प्रॉब्लम जो हमारी आ रही है, जो अभी मेरे से पहले जो टाटा मेमोरियल सेंटर से डॉक्टर घोटा आए थे ना, डॉक्टर विक्रम ने बोला है, एक और प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि आयुर्वेद में हम कैसे भी, क्योंकि ये जड़ी बूटियां हैं, हम किसी प्रकार भी ले लें, तो हम कभी भी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। जैसे एलोपैथी में अभी हम डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हैं, यहाँ हम घर में खुद ही घरेलू इलाज करने लग जाते हैं। कभी हम तुलसी का पत्ता खा लेते हैं, कभी हल्दी ले लेते हैं, उसको कैसे लेना है, कब लेना है, नहीं मालूम। इसकी एक स्टडी बहुत अच्छी पीजीआई से हुई थी, उसमें उन्होंने दिखाया कि तुलसी, अगर हम कहते हैं सुबह उठ के तुलसी का पत्ता मुंह में डाल लो, बट उन्होंने देखा जो तुलसी का पत्ता रोज डाल रहे थे कुछ सालों से, उनको डायरिया हो रहा था। तुलसी एक्चुअली की उसकी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज हैं, उसको रोज खाने से आपका जो बाउल में माइक्रोफ्लोरा है वो मर जाता है। तो उसको भी आपने, जैसे हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, उसकी भी कुछ क्वालिटीज हैं, उसको भी आप हमेशा नहीं ले सकते हैं, उससे उसके कॉन्ट्रा इफेक्ट्स होते हैं। तो प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं ये सब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं है। नहीं, इसको भी आपको किसी स्पेशलिस्ट जो आयुर्वेदा के हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, जो ये ड्रग्स हैं, उनको सेल्फ मेडिकेशन से हमें बचना चाहिए। ऐसे ही गिलोय बोला तो खाते ही रहे, कहाँ से लिया नहीं, बस गिलोय खा रहे हैं, मालूम नहीं। तो इसके लिए आपको एक हमेशा प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। ये पेशेंट है जो मेरे पास पतंजलि से आया है, अभी भी मेरे वार्ड में है। इसका नाम और एज नहीं मैं बताना चाहूँगी, आप इसका देख रहे हैं, आप इसको पीलिया है, जॉन्डिस है। और इसका मेरे को 3 दिन पहले फ़ोन आया था, मैडम ये पेशेंट एडमिट हुआ, ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है प्लस जॉन्डिस है। क्या हुआ? नहीं मैडम, पतंजलि से उसको कोई मेडिसिन मिली हुई है, उसको लिवर टॉक्सिसिटी हो गई। सो ये एक चीज़, इसका मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये पेशेंट को इन्होंने ऐसा बोल दिया, उसको 2 मेडिसिन यहाँ से मिली है। ये दुष्प्रचार होता है। किस तरह दुष्प्रचार किया जाता है, वहाँ देखा हमने, हमने एक टेस्ट किया, ये है डैट टेस्ट। इससे पता चला कि उसको एक ऑटो इम्यून डिजीज है। बट इसका क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये हमने इसको कम से कम 1 हफ्ता रखा, इसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस की, इसको 2 ड्रग्स और मिल रहे थे एलोपैथी, जिनसे लिवर डैमेज भी होता है। बट बहुत आसान होता है किसी को ब्लेम करना बिना टेस्ट किए। तो इस तरह ये गिलोय की रिपोर्ट आ गई पेपर में, गूगल लिपिड की आ गई। इसके लिए हमें डायलॉग चाहिए, लाइक माइंडेड लोग चाहिए जो कि दुष्प्रचार से बचे, जो आजकल की सोशल मीडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सोशल, एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों वॉर्ड्स चल रही है सोशल मीडिया पे। सो मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन आप भूले से बोल देते हैं। एक सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया था, एक भारत में, ये ऑफ कार्डियोलॉजी है बट आपके इंटरेस्ट में होगा, कि अनीमिया विमेन में, प्रेग्नेंट विमेन में बहुत होता है, पर वो आयरन की गोलियां नहीं खाती। तो उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि आयरन की गोली काली होती है, तो हम उन औरतों को लगता है कि ये गोली खाने से मेरा बच्चा काला पैदा होगा, ठीक है, इसलिए वो नहीं खाती। इसमें उस महिला की कोई नहीं है, ये उसको एक इंफॉर्मेशन है, गलत सूचना है। डिस इन्फॉर्मेशन के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। डिस इन्फॉर्मेशन होता है दुष्प्रचार करना। जैसे आपको गलत इन्फॉर्मेशन सबको बताना, नहीं ये गलत है, उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ इंडस्ट्री हो सकता है, बहुत अल्टीरियर मोटिव होता है। तो अब सोशल मीडिया में आपको मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, और इससे बच के हमें दोनों स्ट्रीम्स को इकट्ठे इंटीग्रेटेड अप्रोच, अपनी सोच बदलनी है।
So coming to drug discovery process, ये जो बहुत बड़ा काम अनुराग वार्ष्णी जी कर रहे हैं, प्रॉब्लम है कि आयुर्वेद जिस तरह बताता है किस तरह पत्ते इस समय सुबह निकालो, फूल ऐसे निकालो, ऐसा करो, वो करना अभी मुमकिन नहीं होता. हमें उसको मार्केट करना है. इसलिए जब हम आयुर्वेदिक ड्रग्स को मॉडर्न मेडिसिन की तरह उनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. इसलिए अब हमें ये जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत केयरफुल होना है. क्यों? इसमें तो बेंच टू बेड साइड अप्रोच होगी. जो ट्रेडिशनल ड्रग्स थे जो चल रहे हैं, हल्दी चल रही है, नीम चल रहा है, उसमें आपको इस मेडिकेशन का जरूरत नहीं है. एक चीज और मैं बताना चाह रही थी जो मॉलिक्यूलर लेवल में है कि सारे ड्रग्स इन सिनर्जी, जो स्वामी जी ने सुबह बोला था कि ये जो रॉबुल्फिया हाइपरटेंशन में हुआ था, कि रॉबुल्फिया सर्पगंधा में हुआ था, कि हमने उसका एक मॉलिक्यूल निकाल के एलोपैथी में देना शुरू किया था. उससे क्या हुआ कि बहुत पेशेंट्स को डिप्रेशन हो गया. तो फिर पता चला कि नहीं, जिस तरह आयुर्वेद में देते हैं उसमें 4-5 केमिकल्स इकट्ठे होते हैं, उसको आइसोलेट नहीं करना है. तो एक कॉम्बिनेशन भी चाहिए होता है प्लांट प्रोडक्ट्स के लिए. तो ये एक साइंस है, इवॉल्विंग साइंस है. ड्रग डिस्कवरी का अपना रोल है, रियल एविडेंस का अपना रोल है, और मल्टी सेंटर ट्रायल्स का अपना रोल है. इसलिए हमें एक इंटीग्रेटेड पाथ पे चलना है और अपनी मेथडोलॉजी, अपने इसके ये जो प्रयास है स्वामी जी का और आचार्य जी का, इसको आगे लेके जाना है. धन्यवाद. नमस्कार. Thank you very much, ma'am, for such an inspiring talk and advocating for the drug discovery process, Vedic and modern medicines. Evidence-based approach to elucidating novel mechanisms can further aid in effective integration of Ayurveda and modern medicine to combat cancer. To address this further, may I now invite Dr. Savita Lochapji to deliver her talk on identifying novel mechanistic paradigms for Ayurvedic medicines that could combat cancer. Dr. Lochapji is Senior Research Scientist, Drug Discovery and Development Division at Patanjali Research Institute, Haridwar. She is working towards deciphering mechanism of action of Ayurvedic formulations against several diseases, including cancer, senescence, vitiligo, and tuberculosis. She has worked at CSIR, Central Drug Research Institute, Lucknow, and National Institute of Immunology, New Delhi, for over a decade, mostly on cancer and host pathogen interactions in tuberculosis. We give a very warm welcome to Dr. Savita. Thank you, Pratibha ji. ओम परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी महाराज को मेरा प्रणाम. परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा प्रणाम. Respected dignitaries, you all are pioneers in your respective fields, and today we at Patanjali are humbled and grateful for your presence at this forum. Good evening, everyone. I am Dr. Savita Lochap, part of Drug Discovery and Development Division working at Patanjali Research Institute. So like Dr. Vikram Gota and Dr. M.D. Ray, I would also be talking about the mechanistic aspects of Ayurvedic medicines in cancer. Since I'm part of Drug Discovery and Development Division, I per se believe that the drug discovery process is exasperating for the scientists and the whole team that is associated with that. It is evident with the quote from Sir James Black, who was who won the Nobel Prize for the discovery of beta blockers. It said, "I never found it easy. People say I was lucky twice, but I resent that. We stuck with 4 years with no progress until we eventually succeeded. It was no luck. It was bloody hard work." It clearly describes that how exasperating, how exhaustive it is to work and to develop a new drug from the scratch. Along with that, there's a lot of cost and time that is associated with that, and unfortunately, the process per se is less productive. So I believe that this is the high time that we shift this paradigm slightly towards the transdiscipline of reverse pharmacology. Reverse pharmacology
inspire ourselves from the already traditional medicines and let us take them from the bedside to the bedside. We know that there is a pool of herbal medications, herbal mineral medications. Around 70% of the world population is being treated with traditional medicines, and they are actually working. So let us get ourselves inspired from those medicines, and let us take them back to the benches and give a proof of concept for that. So Patanjali is working towards this reverse pharmacology in Ayurveda. I would be talking about cancer according to through the lens of modern science, and Granthi and Arbuda through Ayurveda. I'll be talking about lung cancer and leukemia. First part of my presentation would talk about lung cancer and then leukemia. So in lung cancer, we looked into the anti-cancer potential of Pistecia antigerrima. The galls of Pistecia antigerrima, they're not fruit, but they are the structures which are derived from the insect on the plant itself. And these galls actually have, they are actually mentioned in Bhaprakash Nighantu that they are very effective if they are to treat the respiratory disorders. So we got inspired from that quote, and we decided to look into the effect of Pistecia antigerrima in treating lung cancer, if it is effective against the respiratory disorders. And as Dr. Chintamani said, that we can cell represents the whole organism. So we decided to look into the efficacy of this extract per se in the human lung cancer cell lines. So the cell lines which we selected were A549, human lung cancer cell lines, and this study we published in 2022 in Frontiers in Pharmacology. So I would like to give a crux of this study that initially what we did was we prepared the extract of Pistecia antigerrima and treated the human lung cancer cells. And we found that the treatment is pushing the cells towards apoptosis. If we compare it with the mechanism of the already known allopathic medicines which are given for the treatment of cancer, they were also pushing. The mechanism of action of those drugs is also that they are going to push the cells towards apoptosis. So that means we had some sort of similarity between the way how Pistecia antigerrima extract is working against lung cancer. So, but the question was how it was doing. We were curious, we were keen to know the mechanism of action of how Pistecia antigerrima is actually pushing the cells towards apoptosis. So we performed a lot of experiments in the lab, and we identified that there are specific proteins that are getting upregulated, downregulated, and they are also undergoing post-translational modifications, and which is leading to an exaggerated autophagy in the A549 cells, which are lung cancer cell lines, and cells are pushed towards apoptosis. Cells are being targeted. But what was there in Pistecia antigerrima that was pushing the cells towards apoptosis? There was a hard work of chemistry team that is there in this study where they identified that it's a penta-O-galoyl beta-D-glucose, a specific molecule which is present in Pistecia antigerrima and pushing the cells towards apoptosis. The major anti-cancer activities that were associated with Pistecia antigerrima were driven by this particular molecule. So we performed an extensive column fractionation, and we actually performed experiments with a lot of fractions, and then we came to this conclusion. We have not stopped till now, but because we actually wanted to understand the we wanted to get into the extensive mode of mechanism of Pistecia antigerrima, we also treated these cells, A549 cells, with Pistecia antigerrima and subjected them to the transcriptomic profiles. So the high throughput study with RNA-seq, we wanted to see whether how many genes were getting differentially expressed to identify the targeted genes which were with the Pistecia antigerrima, and we identified that more than 2,000 genes were getting targeted by Pistecia antigerrima. So, and the study was done with the third party. This study has been outsourced and has been done with the third party to get rid of that biasness, so that we are not biased with our study.
So with the heat maps, we can see that with the increasing dose of Pistecia, the number of genes that are being targeted by Pistecia are way higher in a dose-dependent manner, and more than 1,500 genes were getting upregulated and more than 1,500 genes were getting downregulated. And we also could see that with a dose-dependent manner, there were overlaps between the genes. When we looked into the protein-protein interactions through the network analysis, we found that the major pathways which were targeted through even in the in silico studies, we found that it was cell migration and invasion, apoptosis, cell cycle, PA3AKT pathway, autophagy that were targeted. That means that even in the in silico studies, we are getting the pathways which we actually verified, which we actually got in our through our wet lab studies. So these were our wet lab results where we found that Pistecia antigerema treatment actually inhibited the colony formation. So these are A549 cells, and we can see that these violet spots are the colonies that are made by A549 cells, the lung cancer cells. So if you are going to treat them in an increasing treatment dose, we can see that the colonies are less here. It indicates that Pistecia antigerema treatment is actually inhibiting the colony formation potential of these cells. Even the 3D structures, which mimics the spheroid-like structures or the tumor-like structures, Pistecia antigerema treatment was inhibiting that. Which is again, so our in silico studies showed that the cell migration and the colony formation potential pathways are being targeted by Pistecia, and we actually had the wet lab experiments with us with that. So that validates that. So this is the experiment where we could see that the migration potential, the cancer cells do have the potential of migrating or metastasizing. So this is an experiment which shows that the untreated cells, the potential is way higher, but when we treat them with Pistecia antigerema, the migration potential reduces. This is autophagy. This is again a pathway which was found in the in silico studies, and we had already validated that. We already had the result that Pistecia antigerema targets or exaggerates the autophagy in the lung cancer cells. So this is the molecular marker LC3A and phospho-AMPK which were getting upregulated on the treatment of Pistecia antigerema. That indicates that there is an exaggerated autophagy that is happening with the treatment. Then the apoptosis, so the molecular markers, the cleaved PARP and cleaved caspase 3, we can see that they're also getting upregulated. So these all validations have already been done in our study, but to get the proof of concept, to get more proof of concept, we performed a high throughput transcriptomic study, and we decided to see whether that is getting validated in our previously done experiments. Also, we want to get deep into this, and we actually want to identify that which all are the specific protein targets that are being targeted by this particular herb. So for that, we need that high throughput study, and this study is still going on, and we are going to again validate those high throughput validations in our wet lab. So with this study, we were the first one who actually reported that the penta-galloyl beta-D-glucose, which is a gallotannin, it is present in Pistecia antigerema. PGG, this is penta-galloyl D-glucose. This particular phytomolecule is actually effective against the lung cancer, so we reported it for the first time. And then the transcriptomic profile are still going, and we have also validated our previous findings with that. And the transcriptomic profile also suggests that Pistecia antigerema follows a multi-targeted approach. Now coming to my second study, which is on leukemia. So this particular study is still in its infancy, and we have done a few experiments related to leukemia. So basically, like telling everybody that what is leukemia to the pioneer personalities here. So I would basically concentrate on the differentiation therapy here. So what happens in leukemia is when there is a hematopoietic stem cell. So that hematopoietic stem cell has to reach to a destination. That destination is going to be either the megakaryocyte, erythrocyte, so the cells which are present in blood. So
they have to cross those barriers from the hematopoietic stem cell to the destination cell. So that crossing has to be decided by the transcription factors. So generally in leukemia, what happens is these transcription factors are either mutated or the expressions of these transcription factors are getting modulated. And because of that, these hematopoietic or the progenitor cells are unable to reach their destination. And hence the abnormal immature cells outnumber the cells which are functional in the blood. This particular condition leads to leukemia. So if there is a drug which actually modulates the dysregulated transcription factors, then there could be a possibility that these immature cells reach their destination. So this is differentiation therapy, where we try to subject these cells, the leukemic cells, towards the drugs that are going to rectify the expression levels of these transcription factors and help the cell, the immature cell, to reach the destination. So this is differentiation therapy. On this differentiation therapy, we decided to test the cystogrid diamond, which Dr. M.D. Ray was talking about. So Divya cystogrid diamond, one of the major component is Hirak Bhasma. And in one of the Ayurvedic classics, the Hirak Bhasma has been called as Mrityunjay. That means that it is having a potential of defeating death. So we decided to look into the potential of Divya cystogrid diamond against leukemia. So we have a few preliminary experiments and few preliminary data here. So K562 cells are going to mimic the physiological conditions of the cells which are chronic myelogenous cell, leukemic cell lines. So K562 is a cell line that is going to mimic the physiological conditions of a chronic myelogenous cell lines. So we decided to look if Divya cystogrid diamond is effective against the CML here. So these are the cells, and with the treatment of Divya cystogrid diamond, it is clearly evident that yes, it is doing something there. The cell size has increased, and even the morphology has increased. There are few blebbings which are there in the cells, and even there are few segmentations which could be seen here. So this is a bright field image. So once we observe these kind of things, we fixed the cells and we did the Jimza staining here. Jimza staining was done to clearly visualize the nucleus versus the cytoplasm. So here we can see that the cytoplasm ratio is way less as compared to the nucleus, but with the treatment of Divya cystogrid diamond, we did observe a good population of the cells that were showing these kind of nuclei that indicate that cells were probably kind of going into differentiation. So these look like neutrophils. So we can clearly see that this big nucleus is getting transformed and changing shapes here, and even the cytoplasmic ratio has changed here. So to get deeper into that, we looked into the transcription factors. As I said, that the transcription factors are the major players of leukemia. If they are getting dysregulated, they are not going to allow the immature cells to reach their destination. So we looked into the levels of mRNA levels, the transcription levels of these transcription factors, CD11B. CD11B is a marker of myeloid lineage, which got dose-dependently increased. It indicates that yes, with the treatment of Divya cystogrid diamond, there was a dose-dependent increase of CD11B, and cells were in fact moving towards the myeloid lineage. When we looked into CD61, which is a megakaryocytic lineage marker, it was also getting upregulated. NFE2, which is also a megakaryocytic lineage marker, it was also getting upregulated. But it is not that all the markers were getting upregulated. There were few that were unaffected. So it also indicates that the mode of action of the Divya cystogrid diamond is specific. It is not like it is not affecting all the transcription factors, but it is specifically targeting and specifically pushing cells towards one lineage. We also looked into the effect of the Divya cystogrid diamond in HL60 cells. HL60 cells are the cell lines which are going to mimic the physiological conditions of AML, that is acute myeloid leukemic cell lines. So when we treated HL60 cells with Divya cystogrid diamond, again we found that even the cell size has reduced,
and we can see that the nuclei were getting segmented here. So these segmented nuclei sort of indicate that cell might be undergoing towards the neutrophilic differentiation or other lineages like monocytic lineages. So we looked into the transcription factors again, and CD11B, again a myeloid lineage marker, which was significantly upregulated, and CD14, which is a monocytic lineage marker, was getting upregulated. But still we are working on this project, sir, and it is still in infancy, and we have a lot of other experiments in line for that to further validate the efficacy of the Vis histogrid diamond against leukemia, and the suggestions from the pioneer personalities are welcomed. Now, coming to the concluding remark, I would say that the Vis histogrid diamond did showed very good efficacy against the leukemia. Pistecia antigerrima do have potential against anti-cancer potential, and we are still looking into the mode of action and the specific targets of this specific herb. And if I again come back to the reverse pharmacology, I believe that it is the high time that when the modern science and the Ayurveda club together and complement each other's limitation and work together so that we can help the humankind and we can treat the diseases. Thank you. Thank you, Dr. Savita. With this, I would like to invite Professor Krishnamurthy, who is the Deputy. So, very nice presentation. I'm really impressed by your concept that reverse pharmacology is the way ahead. Yes, it's sir. more cost effective, more efficient, Yes, sir. and time saving, certainly. So, coming to your study on pistachia. Yes, sir. Pistachia induced PGG, which is a type actually, of glucose. Yes, tannin, which is present, one of the metabolite which is present in the extract of Pistecia antigerrima. Right. Yeah. So it's a type of glucose. Glucose का भाई बहन है कोई? भाई No, it is not. The structure is very different, sir. नहीं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है कि नहीं, सिमिलर सा कि नहीं उसमें? I'll show you that. अटैच है उसमें? It is नहीं, not. रीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि because here we can see that this is not a planar structure. Yeah, but अगर उसमें ग्लूकोज मोइटी Yeah, है अगर it is, yes, definitely it is having a glucose moiety, but the structure per se is very different. Right. Yeah. So एक साइंटिस्ट थे वॉरबर्ग, ओटो हेनरिक वॉरबर्ग, उनको 1931 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था जर्मनी में. उन्होंने डिस्क्राइब करा कि कैंसर सिर्फ ग्लूकोज खाते हैं, उनका भोजन सिर्फ ग्लूकोज है. दे कैन एक्सट्रैक्ट एनर्जी ओनली फ्रॉम ग्लूकोज. तो इस फैक्ट को वॉरबर्ग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है कैंसर के क्षेत्र में. और इस वॉरबर्ग इफेक्ट के आधार पे पेट सीटी स्कैन होता है. पेट सीटी स्कैन आप लोगों ने बच्चे जो हैं हमें उन्होंने सुना होगा, पेशेंट कैंसर के मरीज को पेट सीटी कहते हैं, पेट सीटी करा लो भाई. तो पेट सीटी स्कैन में हम लोग एक ग्लूकोज का डीऑक्सी ग्लूकोज होता है और उसको एक आइसोटोप एफ फ्लोरीन 18 से जोड़ देते हैं और उसको शरीर में दे देते हैं इंट्रावीनस. पूरे शरीर में जहां जाता है, जहां भी ग्लूकोज ज्यादा भूखे भक्षण ज्यादा करने वाले सेल्स होंगे शरीर में, वो खा लेगा. ठीक है, एफडीजी. और एफडीजी में चूंकि F18 लगा है, फ्लोरीन है, वो आइसोटोप है, तो वो गामा कैमरे में पिक्चर आ जाएगी. तो इस तरह से हम पकड़ लेते हैं कि शरीर के किस अंग में ग्लूकोज भक्षण करने वाले सेल्स हैं. ठीक है, वो अधिकांश कैंसर के मरीज में वो कैंसर ही होता है, तो हम कहते हैं कि भाई ब्रेन में स्प्रेड हो गई है, लंग्स में हो गई है, तो पेट सीटी में वहां भी आ रहा है शेडो. कुछ कभी कभी नेगेटिव होता है कि जैसे कोई ऑपरेशन के बाद घाव भरता है, वुंड हीलिंग है, उसमें भी पेट सीटी में आ जाता है, क्योंकि वुंड हीलिंग में, फ्रैक्चर हीलिंग में जो तेजी से सेल्स ग्रो कर रहे हैं वो भी ग्लूकोज ज्यादा भक्षण करते हैं. ठीक है, तो ग्लूकोज ज्यादा भक्षण करने वाले सेल्स को पेट सीटी में पकड़ में आ जाएगा, वॉरबर्ग इफेक्ट कहते हैं. तो मैं सोच रहा हूं कि आपका जो पीजीजी है, अगर उसमें ग्लूकोज मोइटी है, तो क्यों ना कैंसर सेल्स को थोड़ा मूर्ख बनाते हैं, उनको धोखा देते हैं और पीजीजी को हम F18 से जोड़ देते हैं. ठीक है, और ये पीजीजी तो है ही इसमें पिस्टैशियो में, तो पिस्टैशियो का एक्सट्रैक्ट दीजिए. ठीक है, और उसमें F18 जोड़ देते हैं हम, तो वो पेट सीटी जब हम करेंगे
तो वो शरीर के हर अंग में जहाँ पे ग्लूकोज भक्षण करने वाले सेल्स अधिकांश मात्रा में हैं, चाहे वो कैंसर के हों या वुंड हीलिंग के, वो अधिक मात्रा में आ जाएंगे और वो हम पकड़ लेंगे। अगर ऐसा है तो पिस्टैशियो देने से पीजीजी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? पिस्टैशियो से क्या हो रहा है सर? पीजीजी जो है एपोप्टोसिस कर रहा है, एपोप्टोसिस कर रहा है हाँ ना, जी, सेल को मार रहा है, ठीक है। इंड्यूस एपोप्टोसिस माने सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का अगर सरल भाषा में सरल जनता को बताना हो तो ऐसा है, जैसे आप कोई इंटरनेट कर रहे हो, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम मैसेज आ जाती है, डाउनलोड दिस प्रोग्राम, फ्री फॉर फ्री ट्रायल, ठीक है। अच्छा, वो फ्री ट्रायल वो बिल गेट्स जी या जो भी बना रहे हैं वो बड़े बुद्धि से बना रहे हैं। 30वें दिन एक मैसेज आ जाएगी, नाउ फ्री ट्रायल एंड्स, इफ यू वांट टू यूज इट पे $30, और ठीक है, नहीं तो वो स्वयं समाप्त हो जाता है। मतलब क्या हुआ, बिल गेट्स साहब ने वो माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्राम ऐसा बनाया कि उसकी 30 दिन के बाद उसकी मृत्यु स्वतः हो जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम सेल डेथ। तो उसी प्रकार से वो दैट कंप्यूटर प्रोग्राम हैज बीन प्रोग्राम्ड टू डाई इट्स ओन डेथ। तो ऐसे ही हर सेल में होता है प्रोग्राम सेल डेथ की भावना या क्षमता, हर सेल में होती है। कैंसर सेल में वो खत्म हो जाती है, इसीलिए कैंसर सेल जैसे कि वो रक्त बीज जैसा राक्षस था, वो बढ़ता जाता है, वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है, वही कैंसर सेल का लक्षण है। तो हम अगर पीजीजी दे रहे हैं तो पीजीजी से क्या वो फिर एपोप्टोसिस बढ़ रही है जी, ठीक है। तो इसको हम थेरेपी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आप और ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टर जया शुक्ला हैं, वो प्रोफेसर हैं न्यूक्लियर मेडिसिन की, और वो पेट स्कैन में काफ़ी नए नए काम कर रही हैं। तो आप उनसे संपर्क करिए, मैं उनको आपको लिंक कर दूंगा। वो हमारी छात्रा थी एम्स में, उन्होंने पीएचडी करी हम लोग के साथ। तो वो पेट के स्कैन में अगर इसको जोड़ देंगी, पहले एनिमल में करेंगे और फिर ह्यूमन में करेंगे, तो पिस्टैशियो क्या, वो पिस्ता जिसे कहते हैं हम लोग, पिस्ता नहीं है कुछ और, अच्छा ठीक है जो भी हो। तो लेकिन ये पीजीजी जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, और उसको आप एक बार स्कैन कर लीजिए। अगर वो पीजीजी कैंसर सेल में ज़्यादा मात्रा में जा रहा है पिस्टैशियो देने के बाद, तो फिर आप उसको थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो पेट सिटी में जो F18 तो सिर्फ आइसोटोप स्कैनिंग के लिए होता है, अगर उसमें कोई ऐसा आइसोटोप जोड़ दें जिससे कि कैंसर सेल की मृत्यु हो जाए, जैसे बीटा एमिटर होते हैं, ल्यूटीशियम एक होता है, तो ल्यूटीशियम में गामा रेज और बीटा रेज दोनों निकलती हैं। तो ल्यूटीशियम को टैग करके अगर पेट सीटी किया जाए तो ल्यूटीशियम में ऐसी क्षमता है, बीटा पार्टिकल्स जैसे कहते हैं, तो बीटा पार्टिकल्स सेल के पास ही 2 मिलीमीटर तक काम करते हैं, और उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वो जो ग्लूकोज भक्षण करने वाले सेल है उसको खाएंगे, और वो चूंकि जहर है, वो बीटा पार्टिकल है, बीटा एनर्जी से सेल मर भी जाएंगे। तो इसका काफ़ी आगे इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, और तो इसमें काम कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत बधाई आपको, बधाई। So I would like to invite Professor Krishnamurthy, who is the Deputy Medical Superintendent, Department of Surgery at Subharati Medical College and Hospital at Meerut, and give a talk on the Ayurveda to allopathy and allopathy to Ayurveda. Dr. Krishnamurthy holds an MS in general surgery and is working as an associate professor in the emergency medicine and traumatology. He has a vast experience in treating critical patients and has an experience of seeing over 5,000 COVID patients. He has additional responsibility of Deputy Medical Superintendent in 1,000-bedded Subharati Teaching Hospital. Apart from the medical college, he is the Executive Officer of Subharati University and the Trustee Secretary of MTV Buddhist Religious and Charitable Trust. We welcome you, sir. सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। ऐसे क्षण में आ गए हैं जहाँ पे बोलना भी है और समय भी नहीं है। आज जब हम सुबह सुबह आए तो पैर को सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। इतने सारे स्पीकर्स जो हमारे गुरु समान हैं, मेरे कलीग्स, मेरे जूनियर्स, सभी को मेरा प्रणाम। आज जब मैं सबसे अलग से अगर मैं किसी को करना चाहूँगा तो अनुराग वार्ष्णेय सर को करना चाहूँगा, क्योंकि ना इन्होंने मेरे को कॉल किया कि आपको आना है। अब मैं उस टाइम पे दुविधा में पड़ गया कि ये मेरे को बुला रहे हैं, पता नहीं टॉपिक क्या है।
तो आयुर्वेदिक कॉलेज में जाके मैं आयुर्वेद के बारे में बोलूं, जबकि मैं ही आयुर्वेद का नहीं हूं, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक व्यक्ति को ये जानना कि उसको नहीं पता है, यही सबसे बड़ी चीज है, नोइंग दैट यू डू नॉट नो। अब जब मैं आज सुबह यहाँ पे आया तो मुझे समझ में तो आ नहीं रहा था बोलना क्या है। फिर मैंने देखा कि अनुराग सर बैठे हुए हैं, अनुराग श्रीवास्तव सर, और ऐसे और लोग बैठे हुए हैं। अब मैंने सोचा कि मैं एलोपैथी में बोलूं, इन लोगों के सामने क्या बोल दूं, ये तो इनका एक्सपीरियंस इतना जितनी मेरी उम्र नहीं है। थोड़ी देर के बाद अगर और कुछ होना था तो मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कि स्वामी जी आएंगे, अरे ये तो स्वामी जी भी आ गए। ऐसा ना हो कि मैं आयुर्वेद के बारे में कुछ ऐसा बोल दूं कि सर मेरे को श्राप व्राप दे दे। तो मैं तब और डर गया। लेकिन जब मैंने टॉक होती सुनी तब मैं बहुत रिलैक्स हुआ, क्योंकि चिंतामणि सर ने, अनुराग सर ने जो बोलने का था सब बोल दिया। इसके ऊपर मेरे ऊपर कुछ बोलने का नहीं है। तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से, जो एज अ मैनेजमेंट पर्सन, मैंने ये चीज देखी कि एज अ डॉक्टर मैं उतना नहीं सीखा। जब मैं मैनेजमेंट में आया तो मैं उतने सारे एस्पेक्ट्स देख पाया चीजों के, जो कभी कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेशनल नहीं देख सकता। सो मैं कोशिश करूंगा अपना जल्दी से खत्म करूं और वो एस्पेक्ट्स बताऊं जो कि मैनेजमेंट पॉइंट से आते हैं। सो मेरा टॉपिक था, दैट दिस इज द टॉपिक आई चोज, आयुर्वेद टू एलोपैथी। पहले हम सब लोग आयुर्वेद में ही थे, धीमे धीमे करके एलोपैथी सामने आ गया। लेकिन अब क्या समय है? अब समय है कि हम एलोपैथी से वापस आयुर्वेद पे ना जाएं, हम एक कंबाइंड अप्रोच पे जाएं, विच इज एलो आयुर्वेद। अगर मैं यहां पे हूं तो मैं अपने माता पिता और अपने गुरुओं के बिना नहीं हूं। मेरे गुरुओं के बारे में इतने गुरु हैं तो हम कितने दिन लग जाएंगे, और आपके गुरु कभी खत्म नहीं होते भाई, आप तो अभी भी सीखते हैं। मैं अपने जूनियर से कितना सीखता हूं। लेकिन अपने माता पिता के बारे में अगर बताऊं तो माय फादर इज डॉक्टर अतुल, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, and he is the founder, rather co-founder of Subharti group of institutes. Dr. Mukti, late Dr. Mukti was a professor of medicine, and she was the sister जो Dr. Anurag बता रहे थे कि because of stress and everything, she was the main founder, main vision and main everything behind Subharti. Because she was a professor of medicine, तो मैं हमेशा से मेडिसिन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था। दूसरी चीज, अगला क्या आता है, मैं किस इंस्टीट्यूट से हूं? डॉक्टर कृष्णमूर्ति, कोई नहीं, डॉक्टर कृष्णमूर्ति एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सुभारती यूनिवर्सिटी। अब इसमें कोई वो है, आपका इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ रहता है, उसकी वैल्यू है। दिस इज माय कॉलेज, सुभारती मेडिकल कॉलेज। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ आयुर्वेद, ऑफ एलोपैथी of allopathy, or we have been there since 2001. Private sector mein it is one of the best colleges. We know there is a poor state in the private colleges, and then also we are doing a pretty good job. We are situated in Meerut, और हमारा ये almost 1000 bedded hospital है. Recently we started dialysis, we started allopathy, we started cancer unit, transplant unit, ये सारी चीज़ हम धीमे धीमे वो कर रहे हैं। Now we come on to me. मैं एक छोटा सा अपना वो बताना चाहता हूँ। हमारी जनरेशन की एक खास बात है, स्पेशली मैं अपने लिए बता रहा हूँ। हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, ना अंग्रेज बन पाए और ना हिंदी सीख पाए सही से, तो हम उस बीच के उसमें हैं। तो वीवर, कोई वो नहीं है एग्जैक्टली करना क्या है जिंदगी में। माता पिता ने बोला कि डॉक्टर बनना है, तब तक कोई वो नहीं था। तो 12th के बाद हम डॉक्टर बन गए। एक बार डॉक्टर बन गए, फिर ख्याल नहीं आया क्या करना है, फिर पता है कि डॉक्टर बनना है। नाउ एट द एंड ऑफ MBBS आई एम थिंकिंग क्या करूं, MBBS के बाद क्या करूं। प्रभाव मम्मी का था, तो माता जी के तरफ से ये था कि मेडिसिन लेनी है। अब मुझे पता है कि मेडिसिन में मरीज तो कभी सही होता ही नहीं तो दवा खिलाता रहूंगा मैं तो। लेकिन हाँ, सर्जरी में भी ओके। लेकिन एक चीज ऐसी है इंडिया में जो कि लैकिंग है, इट इज इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू इमरजेंसी, ऑल द इमरजेंसीज, बट उस टाइम पे, एट दैट टाइम, इमरजेंसी मेडिसिन का कंसेप्ट नहीं था। सो आई डिड व्हाट द सब्जेक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू इमरजेंसी, एंड दैट इज सर्जरी।
सर्जरी से पास इमरजेंसी मैनेजमेंट कोई नहीं आता, वो इससे एक सर्जन सब चीज कर सकता है। जैसे ही इमरजेंसी मेडिसिन का डिपार्टमेंट आया, आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू इमरजेंसी मेडिसिन, बिकॉज वो एक ऐसी जगह है जहां पे हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। आयुष आयुर्वेद अपनी जगह, इमरजेंसी अपनी जगह। देन उसके साथ साथ आई गॉट डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन भारती यूनिवर्सिटी। द टॉपिक वेरी फ्रैंकली हम कुछ भी बोले, आज का टॉपिक है क्या? आज का टॉपिक बेसिकली आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी है। उसको हम कितने अच्छे से बोलें कि किसी को बुरा नहीं लगे, लेकिन देखिए इमरजेंसी वाला जो आदमी होता है ना, उसको आदत होती है टू द पॉइंट बात करने की, बिल्कुल सीधे सीधे। टॉपिक इज बेसिकली दिस, विच इज बेटर? यही सवाल है, केवल ये सवाल है। इसका कोशिश करेंगे कि हमें आंसर मिल पाए बाय द एंड ऑफ दिस। सो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, इट माइट नॉट बी वेरी करेक्ट, और इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने केवल लिखने के लिए, जल्दी करने के लिए लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद इज मोर लाइक अ प्रिवेंटिव अप्रोच। मैं नहीं कह रहा वहां पे क्यूरेटिव नहीं है, बट प्रिवेंटिव अप्रोच। बीमारी हो ही ना पाए, कितना अच्छा हो, आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो। एलोपैथी में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, प्रिवेंटिव मेडिसिन का है हमारे पास डिपार्टमेंट, बट द बेसिक एम्फेसिस इज ऑन द क्यूरेटिव अप्रोच। ये वाला क्यूरेटिव अप्रोच हमारा हर्ब से होता है, यहाँ पे केमिकल्स होते हैं, ये भी बात करेंगे केमिकल्स आते कहाँ से। आयुर्वेद में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वेलनेस, यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है वो है ट्रीटमेंट। एलोपैथी तो डॉक्टर करते हैं, आयुर्वेद कौन करता है? यही जब लोग ये समझना शुरू कर लेंगे तो मेरे हिसाब से हम दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। उस तरफ भी डॉक्टर ही बैठे हैं, दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड, दे आर ऑल्सो स्टडिंग, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ साइंटिफिक प्रोसेस, और उसके बाद ही वो डॉक्टर बन रहे हैं। और अगर किसी को इसके बाद भी कोई शक हो, कोई सोच हो कि क्या है अगली लाइन, दोनों चाहते क्या हैं भाई? आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर जो चाहता है कि मेरा मरीज सही हो जाए, तो एलोपैथी वाला क्या चाहता है? वो भी यही चाहता है, he also wants the patient to get well. With this understanding, रिवर्स फार्माकोलॉजी की बात आई। एक बड़ा वन ऑफ द फेमस एग्जांपल्स इज एस्पिरिन। भाई एलोपैथी वालों को दवाइयां मिलती कैसे हैं? एस्पिरिन के मामले में उन्होंने देखा कि विलो नाम का एक ट्री है, उसके लोग जब उसकी छाल को वो करते हैं तो उनका सर दर्द सही हो जाता है। उन्होंने उसको स्टडी करना शुरू किया, उनको पता चला इसके अंदर एक पदार्थ है जिसको कह रहे हैं एस्पिरिन। दिस इज बेसिकली हाउ ऑल आवर ड्रग्स हैव बीन फॉर्म्ड। उस पर्टिकुलर ड्रग को चिन्हित करके निकाला, उसको रिवर्स इंजीनियर किया, उसको देखा क्या क्या रिसेप्टर्स हैं, उस रिसेप्टर पे ऐसे और क्या क्या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दिस वाज द स्टार्टिंग। 40 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स डाउन द लाइन जब ये शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने सोचा अच्छा अब तो सब चीज ढूंढी जा चुकी, एक काम करो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक छोटा सा तीर इधर लगा दो, पेटेंट मेरे नाम का हो जाए। इसी हिसाब से हमारी दवाइयां बनती जा रही हैं। तो व्हाट वी डिड इज, बिकॉज because of my mother, I saw the effect of this thing. So we have developed a department of integrated medicine in Subharti also. The problem with doing such a thing in a private institute is that the government is after you. In a government institute, you have the liberty of doing a lot of things and no one will ask you anything. जब आप private institute में हो और आप निकाल लो Department of Integrated Medicine, 10 लोग आ जाएंगे, but still, Dr. अवधेश पांडे सर हैं, he is HOD of Nuclear Medicine. अगर हमारी फील्ड में, इफ आई फील दैट पीपल ऑफ माई स्पेशलिटी विल अग्री, अगर हमारी सारी फील्ड्स में एलोपैथी में कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सबसे अलग है, इट इज न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, वो अलग ही लेवल पे काम करता है। डॉक्टर अवधेश पांडे इज द हेड ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। क्या क्या अजीब अजीब सी चीजें ही हैं। मैं तो शुरुआत में बिल्कुल यही मान रहा था, पैर डाल दिए गर्म पानी में और फिर उसके अंदर कुछ चीजें डाल दी, केवल रॉ डाइट लेनी है, केवल ये करना है। बट इस चीज को नहीं झुटलाया जा सकता जो उसका इफेक्ट हुआ, द एक्टिविटी लेवल। पेशेंट में जब चेंजेस आ रहे हैं, ही इज ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ CRF इन सम मेथड्स विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड, बट आई नो इट इज नॉट अनसाइंटिफिक। कर रहे हैं जो लोग 2 दिन 3 दिन में डायलिसिस कराते हैं, वो धीमे धीमे करके 2 हफ्ते में डायलिसिस कराने लगे। तो देयर इज समथिंग, एंड ही इज नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, ही इज नॉट अगेंस्ट आयुर्वेद,
He is on a combined approach which integrates allopathy with Ayush. जो उसकी अच्छाइयाँ उधर से ले लें, जो इनकी अच्छाइयाँ यहाँ से ले लें. वो एक वो नहीं होता, मन ऐसा बने मोती चुक चुक खाए. हमें तो वही बनना. But coming on to the topic, क्या हम लोग we are not taking Ayurveda or other contemporary sciences in allopathy already? It is already there. It is in plain sight. बस हम मानने को नहीं तैयार हैं. मैं इस पे इसलिए नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि यही मेन टॉपिक था और इसके ऊपर सर लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं. बट स्टिल आई विल रश थ्रू देम. हाइपरटेंशन में डाइट मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं, अगर हम चलना फिरना शुरू करते हैं, तो ये तक उन्होंने बता दिया कि इतना इतना बीपी आपका कम हो जाएगा. तो ये है क्या? एलोपैथी वाले तो पहले ये नहीं बताते थे. दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन व्हिच केम इन फ्रॉम इंडियन मेडिकेशन. Similarly, this बहुत डिटेल में today how things happen in cardiac things and other things has been told by sir लोग. अब ऐसे करके this is one of the articles. मैं इसको अगर नहीं भी कोट करूं, हर जर्नल में आपको मिल जाएगा. भाई लाइफस्टाइल चेंज अगर आप कर देते हैं तो ये पेशेंट ज्यादा अच्छा करता है. और ये 3 साल के बाद भी एविडेंट है. हर जगह यही होगा, हर जगह यही लिखने सुनने को मिलेगा. सो व्हाट वाज द कंटेम्पररी इंडियन मेथड सेइंग? वो भी तो यही कह रहे थे. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. अगर हम सर्जरी की बात करें तो पहले एक डाउट था कि अगर सर्जरी करनी है तो कितने टाइम में करें. स्लोली, जो शायद आयुर्वेद में भी कंसेप्ट है कि आप 2 सिस्टम्स को जब छूइए तो 90 डेज का गैप दे दीजिए. हमारे अभी धीमे धीमे ये आ रहा है 6 वीक्स और मे बी 3 मंथ्स. अगर आप हेपाटोबिलियरी सर्जन से बात करें तो वो साफ साफ बताएंगे बाइल डक्ट इंजरीज को डोंट टच बिफोर 90 डेज. 2 सिस्टम्स को ऑपरेट करना है, गिव अ ब्रेक ऑफ 90 डेज. एक कंसेप्ट है, एक हमारे टीचर हैं, उन्होंने मेरे को बताया था और मेरे हिसाब से वो हमें जानना बहुत जरूरी है. पहले हम खाना जो है मुंह से खाते थे, बहुत अच्छी बात है. अब कोई अंग्रेज आएगा, कहेगा मुंह से खाना खा रहे हैं, आउटडेटेड. कान से डाल के देखो, थोड़ा थोड़ा कान में डालेंगे खाना, देखो कितना अच्छी बात है. मुंह में कोई मंजन करने की जरूरत नहीं, कितना अच्छा हो गया, कान से डाला. थोड़े साल के बाद एक दूसरा बंदा आएगा, कहेगा अरे नहीं नहीं, कान से डालने में सुनने में दिक्कत हो जाती है, नाक से डाल के देखो भाई, नाक से डालोगे और अच्छा होगा. तो देखा बगल बगल में है, बहुत ही अच्छा. फिर कई साल तक चलने लगा कि भाई नाक से डालना खाना खाना इज बेस्ट. ये तो इंडियन तरीका जो मुंह से खाने का तो बहुत अच्छा नहीं था. फाइनली एक अंग्रेज आएगा जो कहेगा नहीं भाई, मुंह से खाना जो है वो बेस्ट है. और तब हम कहेंगे देखो उस आदमी ने रिसर्च करी है और वो हमको ये बता रहा है कि मुंह से खाना ही सबसे अच्छी तरीका है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद द वर्ल्ड. अलग अलग तरीके से हर कोई यही बताने की कोशिश कर रहा है. व्हाट डू वी हैव हियर? यस, फॉर कार्डियक, थायराइड, ऑटोइम्यून, एवरीवन हैज टोल्ड किस किस चीज के लिए क्या क्या चीजें होती हैं. लिवर डिजीज के लिए प्रैक्टिकली इन एलोपैथी देयर इज नो ट्रीटमेंट. नाउ थिंग्स हैव कम अप, आई विल नॉट मेंशन वो, वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल. सिरप लिव 52. व्हाट इज इट? इट इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन. ऐसी ऐसी मेजर वर्क इज हैपनिंग ऑन सर्केडियम रिदम, जिसके ऊपर सर ने बोला था लाइट पोल्यूशन. आज मैंने एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द टर्म लाइट पोल्यूशन. हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस के ऊपर बहुत बहुत जोर शोर से सब जगह काम कर रहा है. एलोपैथी वर्ल्ड इज रियलाइजिंग कि दवाइयों से काम नहीं बनेगा. देयर इज सम अदर डायमेंशंस दैट हैव टू बी लुक्ड इनटू. अजीब अजीब वो ये सारी चीजें आ रही हैं. बच्चों को घर पे मत बिठाओ, बाहर निकालो. Give them the life that children in India have been डांट डपुट के किया जा रहा था, वही आपकी सही लाइफ है, यही बताया जा रहा है हर जगह. इस पे मैं कुछ बोलूं? आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट. उसके बाद में इस टॉपिक पे क्या बोलूं? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. भाई ह्यूमन रेस है. जब हम लोगों को पढ़ाते हैं तो 2 तरीके की पढ़ाई होती है. एक है पीडोगोगी. जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का एटीट्यूड होता है जो सामने वाला बता रहा है बिल्कुल सही है. जब आप छोटे थे, आपको जब आपके टीचर कुछ बताता था आप उसको मान लेते थे, बिल्कुल सही है. एक होती है एंड्रोगोगी. एंड्रोगोगी होती है जब हम बड़े लोगों को पढ़ाते हैं. जब बड़े लोगों को पढ़ाते हैं तो 2 क्वेश्चन करते हैं आपसे. वो आपकी हर बात नहीं मानते, वो कहते हैं जो बता रहा है गलत बता रहा है. दिस इज जिस आप लोग हैं, आप लोग भी मन में यही चल रहा होगा. सो वी आर इन दैट थिंग. अगर हम किसी को ये बताएंगे कि आयुर्वेद इज गुड, no one will believe now.
दे विल से, जो आज सर ने टर्म यूज किया, रिसर्च्ड आयुर्वेद, वंडरफुल, दिस इज एग्जैक्टली द एसेंस ऑफ दिस स्लाइड. मुझे नहीं लगता कि मैं पतंजलि इंस्टीट्यूट में खड़े होकर, आफ्टर सीइंग द पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं इसके ऊपर कुछ भी बता सकता हूं कि साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है. इससे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को, मैं तो बल्कि सर से अभी रिक्वेस्ट करने वाला था कि आप हमारे, मैं बाकी टीम मेंबर्स को भी लाके यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज, इससे अच्छी साइंटिफिक अप्रोच नहीं हो सकती. सो जस्ट स्किपिंग ऑन दिस. सो battle between Ayurveda and allopathy. I think right now this is not the battle. The battle is between the unqualified. भाई मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है. मैं आयुर्वेद के ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा because I have no knowledge of आयुर्वेद. उसी तरीके से an आयुर्वेद person will not have proper knowledge of allopathy. मेरे a lot of allopathic doctors do not have knowledge of allopathy. By the curriculum has reduced, we are just pushing out doctors so that हमारा doctor patient ratio world में सही हो पाए. There are so many aspects to it. लेकिन इस सब में फायदा कौन उठा रहा है? अस्पताल में काम कर रहे थे, 1 साल कंपाउंडर की तरह काम किया, अब बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं. वो आदमी आपकी भी दवा खिला रहा है, मेरी भी दवा खिला रहा है, सब चीज खिला रहा है. द प्रॉब्लम कम्स जब ये अनक्वालिफाइड लोग एलोपैथी और आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं तो आधी जानकारी के साथ करते हैं. उनको ये तो पता था कि ये दवा देनी है, ऐसे बीमारी में दे सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस बीमारी में नहीं देनी है, या अगर इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट क्या है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फील इज more important than integration is the fight against unqualified. जो डिग्री होल्डर्स हैं आयुष के या एलोपैथी के, ओनली दे शुड बी परमिटेड टू डू, एंड दे शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट कि भाई हमारा डोमेन यहाँ तक है, इसके आगे का डोमेन इज अननोन टू अस, लेट द अदर पर्सन डू. जो आज इसके पहले मैम ने बोला था कि लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेद की दवाई से नुकसान हो गया. अरे आपने लिया किससे? आयुर्वेद डॉक्टर को तो कंसल्ट किया नहीं. एंडिंग माई स्लाइड, ये बड़ा मेरे जनरेशन के लोग जानेंगे, दिस इज मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा बहुत फेमस वो है. क्या चाहिए आपको? एक हाथ में रेड पिल, एक हाथ में ब्लू पिल. मैट्रिक्स का जो मॉर्फियस ने नियो को दिया था. आयुर्वेद चाहिए या एलोपैथी चाहिए? नहीं, आपको दोनों का एक कंबाइंड अप्रोच चाहिए, जो कि आपको जिस बीमारी के लिए जो चीज सही है वो चीजें दे पाए. विद दिस, ये मैं फोटोशॉप कर रहा था, दो बनाई, मेरे को दोनों ही अच्छी लग रही थी तो मैंने दोनों रख ली. थैंक यू. मैं इसी के साथ सबको नमस्ते करता हूँ. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. Thank you very much, Dr. Krishnamurti ji. Now we have the last talk of this session. Reno respect, may I invite Dr. Rishabh Dev ji. Dr. Dev ji is presently the head in vitro biology, drug discovery and development division at Patanjali Research Institute, Haridwar. Dr. Dev hails from the family of Ayurvedic Vaidyas and has got an extensive industrial as well as academic experience of more than a decade. He is a pharma expert in the domain of drug discovery processes, including target identification and validation, in vitro and in vivo pharmacology, pharmacodynamics, marker identification, high throughput screening, and IND filing. In the past, he has worked at the Ranbaxy and Daiki Sankyo and in different academic laboratories in Japan and in the US. We welcome you, sir. थैंक यू प्रतिभा. ओम. सर्वप्रथम मैं परम पूज्य स्वामी जी का, इस सभागार में उपस्थित सभी डॉक्टर्स का एवं पतंजलि के सभी मेरे साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं. So, topic for my today's talk is Renogrit, a herbal medicine that could protect from drug-induced nephrotoxicity. So before I go into the details of our study, so I will briefly describe you how Ayurveda can help in combating different diseases. जैसा कि अभी हम सुबह मॉर्निंग से ही ये सारी चीजें अलग अलग जो स्पीकर्स हैं उनसे हम सीख रहे हैं, उसी का ही एक सार है कि आयुर्वेदा की
दो तरीके की थेरेपीज हैं. सो वन इज द स्टैंड अलोन थेरेपी. तो स्टैंड अलोन थेरेपी में क्या कि वी आर यूजिंग द हर्बल मेडिसिन्स and we are also doing yogasan, pranayama and meditation, detoxification and dietary intervention. और परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के नेतृत्व में पतंजलि रिसर्च अनुसंधान अलग अलग हर्बल मेडिसिन जो नए कॉम्बिनेशंस हैं, जो पहले अलग अलग तरीके से यूज करते थे, अलग अलग कॉम्बिनेशन में नहीं यूज करते थे, अभी आचार्य जी के और स्वामी जी के ज्ञान से वो जो अलग अलग हर्बल मेडिसिन्स हैं उनका एक यूनिक कॉम्बिनेशंस बनाकर पतंजलि रिसर्च अनुसंधान अलग अलग मेडिसिन्स बना रहा है. तो ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि हमारे मतलब जब तक सभी का साथ नहीं मिलता है तो इस तरह का कार्य आगे प्रगति पर नहीं पहुँच सकता है. तो इसके बारे में अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आयुर्वेदा अपने आप में भी बहुत सारी जो हमारी डिजीजेज हैं उसको क्योर करने में सक्षम है. जो दूसरी अप्रोच है वो है इंटीग्रेटिव अप्रोच विद मॉडर्न मेडिसिन. सो एज वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द मॉर्निंग दैट देयर आर सेवरल लाइफ सेविंग ड्रग्स which increase the lifespan of a person, but these are associated with several adverse effects. So in this situation, Ayurveda can give a unique hope that when you are using the herbal medicine along with the modern medicine, there can be an increase in the synergy, there can be increase in the bioavailability, and there can be a mitigation of the undesirable adverse effects which are associated with the modern medicine. और जो आज की मेरी टॉक है वो इसी पॉइंट के ऊपर ही फोकस्ड है. नाउ कमिंग टू द वैंकोमाइसिन इंड्यूस्ड किडनी इंजरी. एज वी ऑल नो कि जो वैंकोमाइसिन है दिस इज द एंटीबायोटिक विच जो हम यूज करते हैं जब हम सीवियर सेप्सिस हो जाता है, सीवियर इन्फेक्शन हो जाती है, तब इस मेडिसिन को हम यूज करते हैं. तो एक तरफ तो ये लाइफ सेविंग है, बट दूसरी तरफ क्या है कि इसका हमारा किडनी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. ऐसे ही जैसे हम बहुत सारी कीमोथेरेपी वाली मेडिसिन हम यूज करते हैं तो उनका लीवर पर, किडनी पर और हेमेटोपाइटिक सिस्टम के जो सेल्स हैं उन पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है. तो जैसे हमारी लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी तब हमने बताया था कि लिवोग्रिड कैसे अलग अलग लीवर डिजीजेज में हमें बेनिफिट दे सकती है. और जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं इनके प्लियोट्रोफिक इफेक्ट भी होते हैं कि मान लो कोई आपकी मेडिसिन है जो लीवर के लिए है या कोई मेडिसिन किडनी के लिए है, वो उन रोगों में तो लाभ देगा ही, साथ में और भी बहुत लाभदायक एक्टिविटीज हैं जो हर्बल मेडिसिन करती हैं, तो उससे हमें फायदा होता है. तो जो ये वैंकोमाइसिन ड्रग है जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है, तो ये लाइफ तो बचा रही है बट साथ में देयर आर सम एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड टू किडनी. तो ये किडनी में टॉक्सिसिटी करता है और किडनी को डैमेज करता है. तो हमारा जो पतंजलि रिसर्च अनुसंधान का जो फोकस है वो अभी ये भी है कि कैसे आयुर्वेद ऐसी दवाइयों को जो कि लाइफ सेविंग तो हैं बट जिनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं उसको कैसे कम कर सकता है. तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वी आर यूटिलाइजिंग द रिनोग्रेट. सो दिस रिनोग्रेट इट्स ए हर्बल फॉर्मुलेशन and it consists of various herbs like apamark, pashan bhed, palash, varun, पुनर्वा मूल, कांसी एंड गोखरू. तो ये जितनी भी हर्ब्स हैं ये आयुर्वेद में इनकी बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता बताई गई है और इन सभी ड्रग्स को हमने समावेश करके एक फॉर्मुलेशन बनाई है जिसे हम रिनोग्रेट बोलते हैं. तो इस रिनोग्रेट का आगे जब हमने फाइटोमेटाबॉलिक एनालिसिस किया HPLC और LCMS से, तो हमें पता लगा कि देयर आर सेवरल बायोएक्टिव फाइटोमेटाबोलाइट्स लाइक गैलिक एसिड, बर्जेनिन, मिथाइल गैलेट, क्वर्सिटीन, boravinone B, butyrene, and butane. So all of these bioactive compounds, these are very well known to display the anti-inflammatory, antioxidant properties. और इनके अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो लिटरेचर में अवेलेबल हैं कि ये सब इन वाली जो ये कंडीशंस होती हैं जिसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ उन सब में ये बहुत लाभदायक है. तो ये तो कंपोनेंट्स हैं ही जो इसके मार्कर कंपाउंड हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बट दीज आर द बायोमार्कर्स. तो जो ये रिनोग्रेट है इसको हमने दो तरीके से चेक किया. सो फर्स्ट थिंग इज द इन विट्रो बेस्ड एसे सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं कि वी टेक द सेल्स. सो इन दिस केस वी हैव टेकन द किडनी सेल्स, proximal tubule kidney cells,
तो उसमें हमने क्या किया कि हमने स्फीरॉइड मॉडल बनाया. जनरली जब हम सेल्स ग्रो करते हैं, वी ग्रो इन द मोनोलेयर, बट the organs which are present in the body, so they are present in 3 dimensions. So they have a particular shape and they contains variety of the cells, which are like even the same cells are present in the heterogeneous state. कि same cells तो हैं, but वो अलग-अलग state में present होते हैं. तो हमने क्या किया कि अब की बार मोनोलेयर में सेल्स ग्रो ना करके हमने 3D कल्चर किया और उसको हम बोलते हैं स्फीरॉइड मॉडल. तो जैसे ये स्फीरॉइड मॉडल होता है, ऐसे ही अगर हम अलग अलग जो ऑर्गन के सेल्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं तो वो बनता है ऑर्गेनॉइड मॉडल. तो अभी हम स्फीरॉइड मॉडल पर हमने ये स्थापित कर दिया है और ऑर्गेनॉइड मॉडल पे हमारा कार्य चल रहा है. तो इस स्टडी में जो इन विट्रो एसेस हैं वो सभी हमने स्फीरॉइड मॉडल पर किए हैं. तो इसमें पहले हमने वैंकोमाइसिन की डोज को ऑप्टिमाइज किया कि वो कौन सी डोज है जो टॉक्सिक है. ऐसे ही हमने रिनोग्रिड की भी अलग अलग डोजेस को चेक किया ताकि रिनोग्रिड का अपने आप में तो कोई किलिंग इफेक्ट नहीं है सेल्स के ऊपर. और उसके बाद हमने अलग अलग जेनेटिक बायोमार्कर्स इसमें चेक किए, पीजीपी इफ्लक्स चेक किया, और जो किडनी डिजीज रिलेटेड जैसे मार्कर्स रहते हैं, एनएजी रिलीज, वो भी हमने चेक किया. तो मैं बारी बारी ये सारे रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा. So the first slide is about the spheroid culture, the optimization of a spheroid model. So what we did, so we took a different number of cells, like you can see here that we took different number of cells. We started with 300, 600, 1800 till 20,000, and then we grew these cells till various days, like for you can see the individual pictures from the different set for 4-day, 8-day, 12-day and 16 days. So here you can see that when we are using the 10,000 cells and we are growing them till 16 days, so the whole spheroid system is optimized. तो जब ये spheroid system optimize होता है तो इसमें क्या होता है कि there is a core मतलब जो बिल्कुल, so that is having the compact cells, and towards the periphery there are loosely bound cells. So we determined that if we are using the 10,000 cells and we are growing these cells till 16 days, so we have a very well established spheroid system. और इसी spheroid system में ही हमने वैंकोमाइसिन के साथ जो टॉक्सिसिटी होती है वो चेक की है, और रिनोग्रिड से जो वैंकोमाइसिन इंड्यूस टॉक्सिसिटी है वो कैसे इंप्रूव हुई है, कि मतलब उसका दुष्प्रभाव कैसे कम हुआ है, वो हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से जाना है. So this graph shows when we are treating our HK2 spheroid cells with the various doses of vancomycin, so it decreases the cell viability in a dose-dependent manner. Similarly, when we are treating our spheroids with the various concentration of the renogrid, there is a no decrease in the viability, which means the renogrid is safe till 100 microgram per ml in our system. So in further experiments, we have used 10, 30, 100 microgram of the renogrid, and we have chosen 2 millimolar concentration of the vancomycin, which is sufficient to induce the toxicity. So you can see here, so there was a decrease in the viability of the cells. So around 50% of the cells were killed. So 50% toxicity ho gayi thi. And when we treated this spheroid with the increasing dosage of renogrid, so there was a recovery of the cell viability. And you can see at 100 microgram per ml, there was a significant increase in the viability. Thereafter, जब ये वैंकोमाइसिन इंड्यूस हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं कि वैंकोमाइसिन इंड्यूस टॉक्सिसिटी हुई है, तो ये किडनी सेल्स में करते ही कैसे हैं? So there exists a system called as a PGP efflux transport system. तो ये सिस्टम करता क्या है कि कोई भी चीज जैसे सेल्स के अंदर आती है उसको ये बाहर निकालता है. So it causes the efflux of the foreign chemicals or foreign materials. So you can see here we have used the calcium dye. तो ये एक तरीके की डाई है जो हम सेल्स के अंदर हमने लोड की है ये. तो जब आपका पीजीपी जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है, when it is fully active, what it will try to do, so it will try to efflux the calcium AM. So here is the calcium AM. So it will try to efflux the calcium AM out of the cells.
जब वैंकोमाइसिन आ जाता है तो इट इनहिबिट्स द पीजीपी फंक्शन। तो जब ये पीजीपी का फंक्शन इनहिबिट हो गया है तो ये जो कैल्सिन एएम डाई है जो कि पहले बाहर जा रही थी वो और ज्यादा अंदर आएगी। ये नॉर्मल सेल्स में है और ये है जो वैंकोमाइसिन से अफेक्टेड है। ये तो नॉर्मल सेल्स में भी थोड़ी बहुत ये कैल्सिन आती है which further get hydrolyzed and turns into calcium, which is which generates the fluorescence. So when vancomycin inhibited the PGP efflux, so there is an accumulation of the calcium AM which further get hydrolyzed and turns into calcium, which gives the fluorescence signal. तो जैसे ही वैंकोमाइसिन की टॉक्सिसिटी होगी तो जो फ्लोरेसेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो फ्लोरेसेंस वाली जो कैल्सियम एएम डाई है वो बाहर नहीं निकल रही है, वो अंदर ही है। तो जब ये कैल्सियम एएम डाई हमने अपने स्फीरॉइड को ट्रीट किया तो यू कैन सी कि जो फ्लोरेसेंस है वो बढ़ गया है। दिस इज द इंट्रास्फीरॉइडल फ्लोरेसेंस कि जो कि वैंकोमाइसिन ने इनहिबिट किया और कैल्सियम एएम जो डाई है वो इंक्रीज हो गई सेल्स के अंदर। पर जैसे ही हमने रिनोग्रिट से ट्रीटमेंट शुरू किया 10, 30 और 100, यू कैन सी देयर इज ए डिक्रीज इन द फ्लोरेसेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो वैंकोमाइसिन की वजह से जो चीजें एक्युमुलेट हो रही थी, वैंकोमाइसिन एक्युमुलेट हो रहा था वो इनहिबिट कर रहा था पीजीपी को, तो उससे क्या हो रहा था कैल्सियम बाहर नहीं जा रही थी, इसीलिए जो फ्लोरेसेंस है ये ज्यादा था। तो जैसे ही आपने रिनोग्रिट से इसको ट्रीट किया तो वो जो फ्लोरेसेंस थी वो कम होगी, इसका मतलब जो कैल्सियम था वो सेल से बाहर चला गया। तो रिनोग्रिट ने जो वैंकोमाइसिन इंड्यूस इनहिबिशन था पीजीपी इफ्लक्स का उसको कम कर दिया। इसके बाद हमने चेक किया कि जो जब भी किडनी डैमेज होता है तो देयर आर फ्यू मार्कर्स विच आर एसोसिएटेड विद द किडनी इंजरी। वन इज द KIM1 and another one is the NAG. So you can see here, so there was an increase in the KIM1 levels and the NAG with the vancomycin, and it got inhibited in a dose-dependent manner with the renogate. Similarly, जो अदर हमारे टॉक्सिसिटी मार्कर रहते हैं NGAL और मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज 7, तो ये भी रिनोग्रिट के ट्रीटमेंट से इन सभी सेल्स में कम हो गए। तो ये वो एक्सपेरिमेंट थे जो हमने आइसोलेटेड सेल्स में किए कि हमने सेल्स लिया, उनका 3D कल्चर करके एक स्फीरॉइड बनाया जो कि एक ऑर्गन की तरह लगता है, और उसमें हमने रिनोग्रिट से जो वैंकोमाइसिन से इंड्यूस जो दुष्प्रभाव है वो हमने रिनोग्रिट से कम किए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एजेंडा था कि सेम मॉडल को हम एनिमल स्टडीज के अंदर भी माइमिक करें। तो इसके लिए हमने SD-RAT मॉडल लिया। तो जो इनिशियल के 14 डेज थे उस डेज में हमने इनकी क्वारंटीन की और साथ में रेंडमाइजेशन किया। रेंडमाइजेशन करने के बाद जब हमने वैंकोमाइसिन इंड्यूस करनी थी उससे 14 डेज पहले हमने प्रोफाइलैक्टिकली डिफरेंट डोजेज ऑफ रिनोग्रिट 20, 60, 200, 600 मिलीग्राम kg पर डे हमने देना शुरू किया। तो ये जो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट है तो इसने जो बॉडी को सेंसिटाइज किया कि जब वैंकोमाइसिन का प्रभाव किडनी के ऊपर पड़ेगा तो उस समय जो हमने पहले से रिनोग्रिट दे रखा है क्या वो उस प्रभाव को कम कर सकता है। तो आफ्टर 14 डेज ऑफ ट्रीटमेंट देयर आफ्टर वी गेव द वैंकोमाइसिन 150 mg per kg in the morning and 200 mg per kg in the night, along with the different concentration of renogrit which were 20, 60, 200 and 600. तो ये हमने 7 दिन के तक वैंकोमाइसिन भी दिया और साथ में रिनोग्रिट भी दिया। और 8वें दिन हमने क्या किया कि इन जो ये रैट्स हैं इनको हमने ट्रांसफर किया मेटाबॉलिक केजेस में। तो मेटाबॉलिक केजेस में ट्रांसफर करने का कारण ये रहता है कि जब हम इनको मेटाबॉलिक केजेस में ट्रांसफर करते हैं तो जो इनका फीकल मैटर होता है, फीसिस होता है या उनका यूरिन है, वो एक कलेक्ट होता है साइंटिफिक वे में, और उस यूरिन को और जो फीकल मैटर है उसको हम फर्दर टेस्ट कर सकते हैं। तो 8वें दिन हमने इसको मेटाबॉलिक केजेस में रखा और 9th डे पर हमने ये स्टडी टर्मिनेट की। और उसके बाद हमने सीरम के अंदर ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, AST, ALT, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और यूरिन में बन, क्रिएटिनिन, KIM1, NAG, ये सभी पैरामीटर हमने चेक किए। हमने ये भी चेक किया कि बन और क्रिएटिनिन जो कि किडनी इंजरी मार्कर हैं वो कैसे मतलब कम हो रहे हैं, और जो वैंकोमाइसिन से किडनी का जो वेट है उसके ऊपर
कैसे रिनोग्रिट ने अच्छा प्रभाव दिया वो भी हमने चेक किया, और साथ में हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ किडनी भी की हमने। तो ये जो फर्स्ट रिजल्ट है ये है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इन सीरम। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन, तो हमने देखा कि with the administration of the vancomycin, so there was an increase in the blood urea nitrogen as well as there was an increase in the creatinine level, which were attenuated with the increasing dose of the renogrit. तो ये जो दो पैरामीटर हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन, ये जो बढ़ गए थे ये कम हो गए। साथ में ही ये जो हमने देखा कि ये एक तो है ब्लड में चीज़ों का बढ़ना, और दूसरा है कि ब्लड में से कैसे ये क्लियर होते हैं। तो ये है बर्न क्लियरेंस एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो जो पहले चीज़ें जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन था उसका लेवल कम नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा था ये। तो ये जब हमने रिनोग्रिट का उपयोग किया तो ये डोज डिपेंडेंट मैनर में बर्न क्लियरेंस भी बढ़ गया और क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी बढ़ गया ये। इसके बाद हमने चेक किया यूरिन के अंदर, जो यूरिन में यूरिया नाइट्रोजन है, तो क्योंकि ब्लड में ज्यादा बढ़ा हुआ था इसलिए यूरिन में कम था। तो वही चीज हमने यहाँ पर देखी है कि जो ये यूरिया नाइट्रोजन है क्योंकि ब्लड में इंक्रीज था इसलिए यूरिन में कम था ये। पर जैसे ही हमने रिनोग्रिट की ट्रीटमेंट दी तो ये हमारा जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की वैसे वैसे जो यूरिया नाइट्रोजन था वो यूरिन में बढ़ गया। कि मान लो कि जो चीजें पहले ब्लड में थी और बाहर निकल नहीं रही थी इसीलिए यूरिन में वो लेवल कम था, बट जैसे ही आपने रिनोग्रिट का उपयोग किया तो ये हमारा लेवल बढ़ गया। सिमिलरली जो यूरिन क्रिएटिनिन है वो भी इंक्रीज हुआ, और जो ग्लोमेरस फिल्ट्रेशन रेट है ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको पूरी किडनी के जो कंडीशन है उसको बताता है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी हमने देखा कि वैंकोमाइसिन से ये कम हुआ और उसके बाद रिनोग्रिट से डोज डिपेंडेंट वे में ये हमारा जो ग्लोमेरस फिल्ट्रेशन रेट है ये भी नॉर्मलाइज होने की तरफ चलने लगा ये। इसके बाद जो हमारा ये किडनी वेट था जो ये बढ़ गया था ये भी रिनोग्रिट की प्रेजेंस से ये कम हुआ। साथ में जो NAG और कीम1 थे ये दोनों पैरामीटर्स भी डाउन हुए। तो ये सभी जो चीजें हमारी बायोकेमिकल और जो किडनी इंजरी रिलेटेड मार्कर्स हैं, इसके बाद हमने हिस्टोपैथोलॉजी भी की है इसकी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में हमने चेक किया है कि ये हमारे नॉर्मल जो किडनी है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। तो जब हमारा ये वैंकोमाइसिन से डिजीज हुई तो यहाँ पर ये कास्ट फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर आपका नेक्रोसिस भी हुआ, इन्फ्लामेशन भी हुआ। तो ये सारी जो चीजें थी ये जैसे जैसे रिनोग्रिट इस्तेमाल किया उसके बाद ये सारे जो पैरामीटर्स हैं जो किडनी इंजरी रिलेटेड पैरामीटर्स हैं ये सब के सब डाउन हो गए ये। तो इस तरह से इसके बाद जो इसके हमने सेमी क्वांटिटेटिव स्कोरिंग भी की जिसमें ये ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ट्यूबुलर डायलिटेशन, ट्यूबुलर कास्ट फॉर्मेशन, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन एंड टोटल लीजन स्कोर, तो ये भी सब रिनोग्रिट से बेटर हो गया ये। और इसके बाद हमने हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स भी चेक किए। तो इसमें जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स थे और न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स थे जो कि डिजीज कंट्रोल में बढ़ गए थे, ये भी रिनोग्रिट से हमें सिग्निफिकेंट इनका लेवल जो है वो कम हो गया। तो इस तरह से इसके बाद हमने ये देखा कि जब हमने ये रिनोग्रिट का ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो रिनोग्रिट की सेफ्टी पैरामीटर्स भी चेक किए हमने कि ड्यूरिंग स्टडी अगर कोई हमारा लीवर फंक्शन हमारा अगर कोई अल्टर होता है तो उसके लिए हमने AST और ALT भी चेक किया। तो ड्यूरिंग द होल ट्रीटमेंट देयर वाज नॉट एनी अल्टरेशन इन द AST एंड ALT लेवल्स। सिमिलरली जो हमने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम था वो भी हमने चेक किया कि रिनोग्रिट के उपयोग से इन सभी पैरामीटर्स पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। तो इन दोनों जो हमारी इन विट्रो सेल बेस्ड एसेस किए और जो हमने इन वाइवो एनिमल स्टडीज की उसमें हमने पाया कि रिनोग्रिट सिग्निफिकेंटली इनहिबिटेड vancomycin induced toxicity in spheroids generated from human kidney proximal tubule cells through modulation of MMP7, injury markers like KIM1 and NAGL, and in rat model of vancomycin induced acute kidney injury. So Renogrit, it significantly reduced the serum level of burn and creatinine, which are the kidney injury related markers, and they have improved the burn and creatine clearance,
And further, the Renograte, it also abrogated the vancomycin-induced increase in relative weights of kidney. So Renograte did not, and जो हमने safety check किया उसमें हमें पता लगा कि Renograte, it didn't affect the liver function and the serum electrolytes level. So the Renograte, it holds a clinico-therapeutic potential for kidney disorders. तो ये जो हमने evidence generate किया in vitro cell culture से और in vivo model से, इसमें ये पता लगा कि जो vancomycin induced kidney toxicity है, उसमें Renograte, it holds a very good potential to decrease the vancomycin induced toxicity. तो सिमिलरली जो हमारी दूसरे अभी एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारी स्टडी है वो चल रही है, वो है सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी. जैसा कि आज सुबह भी डिस्कशन हो रहा था कि जब हम ये कैंसर की कीमोथेरेपी हम करते हैं तो उससे भी किडनी की नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है. तो सिस्प्लेटिन इज वन ऑफ द ड्रग विच इज यूज्ड इन कीमोथेरेपी टू ट्रीट द कैंसर. सो आवर स्टडीज आर ऑनगोइंग, so that we will be generating similar kind of evidence, and we will be evaluating how Renograte can help in cisplatin-induced toxicity. So with this, I would like to end my presentation. And I would also like to take this opportunity to thank Param Pujya Swami ji, who has given us this opportunity to showcase our results. In fact, it's too good to be true. जो आपने बताया है यकीन नहीं होता. हिस्टोपैथोलॉजी में भी आया था. हाँ जी. अच्छा, और हेमेटोलॉजी पे कोई इसका नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर. अविश्वसनीय, बहुत अगर बहुत कमाल है पैरामीटर्स. थैंक यू सो मच. Thank you very much, sir, for explaining the detailed mechanism of Renograte and also its safety. It is indeed a privilege at PRI to work under your guidance and learn from you. With the blessings of Param Pujya Swamiji and Param Shraddha Shri Acharya Ji, as we come to the end of day 1 of this conference, may I request Professor Y.K. Gupta Ji to please come to the dais and summarize today's conference through his concluding remarks. नौ बजे से लेकर के ठीक 5 बजे तक 8 घंटे का कार्यक्रम, जिसमें कि इतने गहन विषयों पे इतने एक्सपर्ट्स लोगों ने व्याख्यान दिए, अपने विचार प्रकट किए, इसका समराइज करना बहुत ही मुश्किल काम है. एक चीज मुझे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, मैं सुबह 9 बजे से स्वामी जी को देख रहा हूं और शाम के 5 बजे तक खाना खाने के बाद बहुत लोगों को झपकी आई, नींद आई, पीछे वाले लोग बीच में उठ के चले गए. एक ही आदमी था, पता नहीं कैसे समझ में आ रहा था उसको हर चीज, बिना किसी व्यवधान के एकाग्रता से, चाहे वो इन विट्रो हो, चाहे इन वीवो हो, चाहे क्लिनिकल ट्रायल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन की बात को सुन रहा था. तो स्वामी जी आपके तो हम, किसी ने रीनो ग्रिड बनाई तो किसी ने मधु ग्रिड बनाई थी, लेकिन एक ध्यान ग्रिड कहां से आपने बनाई जो इतना तगड़ा ध्यान से जितने विद्यार्थी लोग बैठे हैं. तो अनुराग भाई इसकी खोज करें और नुस्खा आपके पास स्वामी जी से मिलेगा आपको, कि ऐसी चीज बनाएं जो कि इतने 5-5, 8-8 घंटे तक उतने ही ध्यान से लोगों को सुने. ध्यानोग्रिट उसका नाम रखा जाए, या उसका नाम रखाएं स्वामी ध्यानोग्रिट, कुछ ऐसा रखें कि ये हम सब लोगों को, मेरे ख्याल से हमको, हमारे बच्चों को, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को इतना बिकेगा कि मतलब हर आदमी सोचेगा कि एग्जाम पास करने के लिए तो यही चाहिए.
ये जो सुबह एक जो फोकस्ड अप्रोच स्वामी जी ने दी आज सुबह, और ख़ासतौर से उन्होंने जो शुरुआत करी इससे कि हमें एक दूसरे की जो पद्धति है, सिद्धांत है, उसको जोड़ के, उसका एक दूसरे का सम्मान करके, उसका समन्वय करके, उसकी एक दूसरे की शक्तियां एक दूसरे के विपरीत नहीं, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करके मॉडर्न साइंस को उसमें पिरो करके, जो आयुर्वेद की जो हम चाहें उसको रिवर्स फार्माकोलॉजी कहें, वो रिवर्स फार्माकोलॉजी में शब्द में कुछ अटपटापन शुरू से लगता है। रिवर्स कुछ नहीं होता, सब सीधा ही जाने वाला है। साइंस साइंस है। चाहे हम ये काम क्यों कर रहा है इसकी साइंस करें, कर रहा था वो कितना कर रहा है उसकी साइंस करें, चाहे हम उसका नया उपाय खोजें, जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ों में बताया यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो भी एक साइंस है। तो उसमें जो उन्होंने जो एक हम लोगों को जोश दिलाया, उसके बाद सभी लोगों ने जो उस पर कहा, खास तौर से मैं अनुराग वासने जी का और उनकी टीम का, यहाँ पे उस टीम में यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे हम कहेंगे चाहे एक बार हाथ ही उठा दें, जिससे कि कम से कम पता लग जाए कौन कौन हैं, जो बहुत से नहीं भी हैं। और ये इनका अथक परिश्रम है, जो कि हम पहले कहते थे कि ये बड़ी साइंस में कमजोर है, ये जो आयुर्वेद है, लेकिन उन्होंने ये सब मिलके ही दिखा दिया, इतने सारे पब्लिकेशन करके, इतने हाई इम्पैक्ट फैक्टर में करके, और ऐसी ऐसी लैब बना करके कि कोई भी साइंस, बड़े से बड़ा साइंस वाला अब उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता फाइंडिंग क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा है। तो हम सबको एक लिए, कम से कम उनके लिए एक करतल ध्वनि जो करनी चाहिए। और दो तीन चीजें जो अनुराग जी ने बताई कि, और इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को सोचना पहले कि इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट जरूरी है, जो कि कंटेम्परेरी हो, आज के परिप्रेक्ष्य में वो दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। सोचने के बाद दूसरी चीजें जो आती हैं, बड़े बड़े हमने इंस्टीट्यूट देखे, इतने सारे एम्स देखे, इतने सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट आता है और वो पड़ा रहता है कई साल तक, और उसमें कुछ दिनों के बाद वो रिटायर हो जाता है। मतलब उसको हम कह देते हैं कि भैया अब तुम्हारी उम्र खत्म, तुम खुल न सके तो हम क्या करें। तो लेकिन यहां पे मैंने देखा कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट पे काम करने के लिए लोगों को सीखना होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन पे ट्रेनिंग, और वो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल होता है हर एक में, तो वो भी एक जरूरी है। इसके पीछे मैं ये भी एक बार कहना चाहूंगा कि एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, GLP, जिसकी आज की बहुत जरूरत है, उसको हम यहाँ पे कराएंगे, और वो करना जरूरी है, जिससे कि लोग सीखें कि डॉक्यूमेंट को लिखना कैसे चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होना चाहिए, कितने साल तक उसको आर्काइव करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि MD MS वाले विद्यार्थी होते हैं ना, वो जब MD करके या MD MS करके या रिसर्च फेलो करके चले जाते हैं घर, और साथ में अपना बोरी बिस्तर के साथ में वो भी ले जाते हैं। जब उनके गाइड से पूछो भाई इसका डेटा कहाँ है, तो वो कहता है वो तो ले गया लड़का। लड़का कहाँ है? लड़के का तो एड्रेस नहीं है। दूसरा अवस्था आती है जो बड़ी बड़ी जगह हुआ है कि भाई इसका डेटा कहाँ है, वो तो साहब अलमारी में रखा था। अलमारी कहाँ है? वो तो चूहा खा गया। तो डेटा मिलता ही नहीं है, क्योंकि डेटा होता ही नहीं है, तो मिलेगा कहां से। तो ये जो हम एक जोर देते हैं हाई इंपैक्ट फैक्टर में पब्लिश करो, उससे भी ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर से हाई इंपैक्ट फैक्टर की जरूरत है आपका नाम देने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी फैक्टर। दुनिया आपकी इज्जत तब करेगी जब रिप्रोड्यूसिबिलिटी फैक्टर होगा। बड़ी बड़ी लैब दुनिया की डूब जाती हैं जब उनका रिप्रोड्यूसिबिलिटी फैक्टर नीचे आने लगता है।
नोबल लॉरियट्स को नौकरी से निकाला जा चुका है कि उनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी फैक्टर नहीं हुआ, और इसलिए कोलैबोरेटिव अप्रोच की बहुत जरूरत है। जो हमने यहां पे किया वो दूसरी जगह रिप्रोड्यूसिबल हुआ कि नहीं हुआ, जो दूसरे ने किया वो हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाए या नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला इकाई जो सबसे जरूरी होती है वो स्टूडेंट की या जो बेंच वर्कर है उसके लिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ये, लेकिन जिस तरह से जो रिकॉर्ड कीपिंग, लॉग बुक कीपिंग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जाके खुद लैब में मैंने इनके साथ में एक एक टेबल पे देखा किस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे लिए। उसके बाद डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, जिनका कि पता नहीं संस्कृत कहाँ से इतना ज्ञान इन्होंने हासिल किया, और आप लोगों ने शायद एक चीज इनके छोटे भ्राता ने जब शुरुआत में कही वो सांकेतिक लग रही थी। इन्होंने अपने, इनके जो छोटे भाई हैं वो हैं यहाँ पे, अनुपम जी, अनुपम जी ने अपने पहले ही शुरुआत में अपने बड़े भाई को आदर दिया कि मैं उनके सामने पहली बार बोल रहा हूं। ये संस्कार, ये संस्कार ही हमारी शक्ति है, और ये सांकेतिक संस्कार है जो हमारी शक्ति है। तो मतलब हम तो इन दोनों भाइयों को, इनको तो थोड़े दिन से जाना था, इनके बड़े भाई साहब को तो हम बहुत साल से जानते थे, लेकिन अब दोनों के पिताजी माताजी के लिए हमारी बहुत श्रद्धा बढ़ गई कि जिन्होंने ऐसे लोग बनाए। और अनुराग जी के, ये मैं इसलिए कह रहा हूं खास तौर से यहाँ पे बैठे यंग बच्चे और लड़कियां हैं, तो ये हमारी एक संस्कृति का बहुत, हम अपने सिकंदर को तो हम बड़ा इज्जत देते हैं, जीता जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जो जीता वो अशोक, या जो जीता वो, हम अपने देश की शक्ति को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसीलिए तरह से हम अपनी जो हमारी ये पद्धतियां हैं उसको हम धीरे धीरे, तो ये एक बड़ा सांकेतिक है। तो अनुराग जी को जितने संस्कृत के श्लोक याद थे, और श्लोक याद होने लिखे तो हम भी कई बार लिख देते हैं जोश में आके, लेकिन पढ़ नहीं पाते उसको ठीक से, और पढ़ने के लिए हमको बड़ा याद करना पड़ता है। इन्होंने तो ऐसे धारा प्रवाह से, जैसे कि कथावाचक भी क्या पढ़ेगा और उसका एक एक का मतलब। और इसी तरह से जो डॉक्टर चिंतामणि ने साहब ने जो संस्कृत का वो किया, प्रोफेसर चिंतामणि साहब ने भी इतने श्लोक इतना अच्छी तरह से उसको निट किया कि मॉडर्न साइंस से हमारी जो आयुर्वेदिक साइंस कहां से कहां आ गई। कई बार हम जोश में ज्यादा उसकी तारीफ कर देते हैं अपनी साइंस की, कहीं जोश में हम दूसरे की साइंस की बुराई कर देते हैं, क्योंकि जब तक आप दूसरे की साइंस की बुराई नहीं करोगे तो अपनी साइंस उभर के नहीं आएगी। ऐसा होता है ना अक्सर, तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? अरे दोनों की साड़ी सफेद है भाई, तुम्हारी साड़ी, तुम्हारी शर्ट, ये है ना एडवर्टाइजमेंट, याद है आपको? तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? यहां पे दोनों की कमीज सफेद है, दोनों की साड़ी सफेद है। तो हमें देखना है कि ये, तो इसलिए ये जो चिंतामणि साहब ने भी और अनुराग जी ने भी जो दोनों का विवरण दिया इतना बढ़िया कि उससे हमको लग रहा था कि अगर दोनों शक्ति मिल रही है। और मैं खास तौर से ये ऋषभ देव साहब, उनसे ऋषभ देव कृष्णामूर्ति साहब से भी कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा भाषण था, लेकिन
थोड़ा सा करेक्शन, हम आपस में लड़ाई वाला, इन्होंने खुद ही बाद में कहा कि ये वर्सेस वाली बात नहीं है। वर्सेस का मतलब है कि आपस में भिन्नता, आपस में लड़ाई है, भिड़ंत। ये भिड़ंत नहीं है। अगर भिड़ंत है भी तो वो भिड़ंत है जो कुश्ती के बाद जो बाहर निकलते हैं तो ऐसे गले मिलते हैं कि जैसे जुड़वा भाई हों। तो भिड़ंत करना एक दूसरे की शक्ति को पहचान के उसका समन्वय करने के लिए। तो ये फिर भी बहुत अच्छा आपने ये बोला। और मैंने देखा कि डॉक्टर एमडी रे और डॉक्टर सरिता लोचन साहब मैडम और जो डॉक्टर मीनू और डॉक्टर भानु, इन्होंने अपने सारे में, डॉक्टर भानु ने भी बताया, उन्होंने चैलेंज दिया, बहुत सही चैलेंज, कि अरे भाई कहीं पे हम भी आपको कभी जब मौका लगा तो बताएंगे। हमने एक पेपर पब्लिश किया जो एक नैपर एक नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जिसने कि बीएमजे में पेपर पब्लिश किया कि जो हर्बो मेटेलिक भस्म जो होती हैं उससे बड़े सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं और इतनी किडनी फेल हो जाती है। तो हम लोगों ने सोचा चलो करके देखते हैं। तो हमने स्टैंडर्डाइज भस्म आयुष से ली और उसके बाद में आयुर्वेद के फिजिशियंस के साथ में क्लिनिकल ट्रायल किया और हमने देखा कि हर्बो मेटेलिक भस्म को करने के बाद मेटल वॉज प्रेजेंट था, लेकिन किडनी टॉक्सिटी इंजरी नहीं हुई थी। तो ये उसके बाद इस पेपर का इतना हुआ कि हमने सोचा ही नहीं था कि इतना इंपॉर्टेंट हम लोगों ने काम कर दिया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो न्यूज आती हैं, इस तरह जो पब्लिश पेपर होते हैं, जैसे कि उन्होंने 2-3 पेपर दिखाए, उसको हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये गलत है, और ऐसा भी नहीं लेना चाहिए कि सार्वभौमिक सत्य है। करना क्या चाहिए, उसको उसी की भाषा में सिद्ध करो, साइंस बेस्ड एविडेंस लेके आओ। वो सही है तो हम मानेंगे, उसमें कमी है तो हम मानेंगे, वो गलत है तब हम अपने डेटा से बताएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं ये तो मॉडर्न मेडिसिन वाले ने पब्लिश किया है और ये गिलोय में नुकसान दिखा रहा है, हम नहीं मानते, तो दुनिया नहीं मानेगी। लेकिन हम उसी को अपने साइंस से, साइंटिफिक एविडेंस से बताएंगे कि ये आपकी ये मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम थी, ये एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम थी, ये डोजिंग में प्रॉब्लम थी, ये साइड इफेक्ट को असेस करने की प्रॉब्लम थी, तब हम दुनिया को कन्विंस कर पाएंगे। और वही हमको करना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि हर्बल मेडिसिन आर एब्सोल्युटली सेफ। पानी में भी साइड इफेक्ट है। अगर आप 20 लीटर पानी पी जाएं तो वाटर टॉक्सिटी इज ए नोन थिंग। तो कोई कहे कि साहब पानी में तो कोई टॉक्सिटी नहीं है। जब वर्ड टॉक्सिटी बोलते हैं तो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, डोज डिपेंडेंट, और अदरवाइज साइड इफेक्ट होता है। हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन टॉक्सिटी तो है। तो उसी तरह से, या अगर मान लीजिए किसी के किडनी में प्रॉब्लम है तो वाटर 2 लीटर पानी भी टॉक्सिटी हो जाएगी। तो ये चीजें किस परिप्रेक्ष्य में हम उसको दे रहे हैं, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये भी हमको जब भी, और इसीलिए हमने शुरू किया था आज से 10 साल पहले हर्बल ड्रग्स का फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम, नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम का, जिसके हम नेशनल साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर हैं। हर्बल ड्रग का भी होना चाहिए कि अगर किसी को किसी से साइड इफेक्ट हो तो वो उसको नोट करे, रिकॉर्ड करे, और एक जगह इसका पंजीकरण हो, और पंजीकरण के बाद में उसकी एनालिसिस हो कि ये प्रिपरेशन में प्रॉब्लम थी, या इसके फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम थी, या इसको देने में प्रॉब्लम थी, या इससे ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ये एक उस पूरे लेक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट था। आखिर में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। इस पूरे दौरान में मुझे पीछे बैठे वाले ये लोग बताएं, खास तौर से बच्चे लोग, प्लीज हाथ उठाएं कि आप में से किसको, कौन ऐसा है जिसको कुछ नहीं समझ में आया आज के दिन में, जिसको कुछ नहीं समझ में आया, हाथ उठाएं।
किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब सबको, अच्छा जिसको सब समझ में आ गया वो हाथ उठाएं। अच्छा किसी हाथ उठाएं वो जिसको कुछ कुछ समझ में आया हो। कुछ ने हाथ, किसी ने तो हाथ उठाया ही नहीं। तीनों सवाल में, इन 3 सवाल के अलावा चौथा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इन जिन्होंने किसी सवाल के जवाब में हाथ नहीं उठाया, उनका जवाब है कि उनके हाथ में फ्रीजिंग शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर। तो आप एक मसल रिलैक्सेंट का खोज करें। ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें जोश हमारे अंदर ने पूछने की शक्ति नहीं है, लीडरशिप नहीं है कि हम बता भी सके कि हमारे दिल में क्या है। न तो समझ में आया क्या, हाथ नहीं उठाया, नहीं समझ में आया फिर भी हाथ नहीं उठाया, कुछ कुछ समझ में आया फिर भी हाथ नहीं उठाया। सो रहे हो क्या? कितने लोग सो रहे हो मुझे ये बताओ, कितने लोग जग रहे हैं ये बताओ। अब लोगों ने हाथ उठाया तो सब जग रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार मैंने यही सवाल पूछा था जहां पे कि बड़े अंग्रेज, और हम भी उसमें अंग्रेजी बने हुए थे, मतलब सारे एक वक्ता ने एक भी हिंदी में नहीं बोला था, और उसमें से 80% लोग शाम को 5 बजे सो रहे थे। कारण कि जब हम अपनी साइंस को ऐसी भाषा में बोलें जो हम कम्युनिकेट कर सकें, तभी उसका असली महत्व है। और ये धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। उसमें मोदी जी ने बहुत अपना प्रयत्न किया और स्वामी जी का भी बहुत प्रयत्न है। हम धीरे धीरे हम अपनी भाषा में साइंस को जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपको उस लैंग्वेज में जो आप समझ सकें, हम समझ सकें, आसानी से स्वामी जी समझ सकें और स्वामी जी की बात हम समझ सकें, तो वो तो एक हिंदी में बोलते हैं, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस। अब पता ही नहीं है ना, हिंदी तो भूल गए ना। भैंस कड़ी, अब आगे आप लोग याद करिएगा, भैंस कड़ी पकड़ा है वो तो अपना वो करती रहती है। तो कुछ भी बोल जाओ उसके सामने। तो ये एक बहुत जरूरी है हमारे ख्याल से। ये आज का एक लेसन हमें लेना चाहिए कि हमें अपनी भाषा में कितनी भी मुश्किल साइंस हो, जैसे कि अभी आखिर में उन्होंने बताया, इतनी सरल भाषा में इतने इन विट्रो और इन वीवो का जब डिस्क्रिप्शन कर दिया, तो मुझे लगता है कि पीछे बैठे वाले बच्चों को भी सब समझ में आया होगा। जब उनको समझ में आएगा तभी तो बात बनेगी। तो ये एक मुझे तो लगता है कि बहुत बढ़िया चेंज है। और मैं खास तौर से बच्चों को पीछे कह रहा हूं कि कभी भी अपने दिमाग में आए हुए प्रश्न को व्यक्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में निपुण होना चाहिए। आपको सवाल पूछने की कला में निपुण होना चाहिए। आपको अपने जोश में जो आपके सवाल आपके दिमाग में हैं, चाहे स्वामी जी से हो, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, चाहे किसी भी साइंटिस्ट से हो, चाहे अनुराग से हो, पूछिए और फिर उसका सवाल पूछेंगे, तभी आपको इस विज्ञान के इसमें खुशी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कल फिर मिलूंगा। हाँ जी, आइंस्टाइन का कोड दे दो जरूर। डाइए डॉक्टर साहब। तो आज बहुत भारी भरकम ज्ञान से आप आप्लावित हुए हैं और चीजों की गहराई में जाकर के देखना चाहिए। कुछ बेटी प्रश्न पूछ रही है, आपने कहा कि प्रश्न पूछना भी सीखना चाहिए, तो जी बेटा। परम श्रद्धेय स्वामी जी, कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा शतशः नमन। सर, मेरे मन में सवाल तो था, बट मैं इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी। सर, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा। अब एक नई स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है फ्रूटेरियंस की। लोग बड़े से बड़ी बीमारियां केवल फ्रूट्स खा के क्लियर कर रहे हैं।
और उनका मानना ये है कि फ्रूट्स जो है डायरेक्ट सनलाइट से पक जाते हैं, जो हम गैस से पकाते हैं या फिर जो भी है, दिस इज डायरेक्टली बाय कुक्ड बाय द सन एंड व्हेन वी ईट इट इट गेट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड। तो जो हीलिंग प्रोसेस है कोई भी डिजीज की वो जल्दी हो जाती है। तो जो हमारा टॉपिक है प्लांट्स टू पेशेंट्स, हाउ वुड मतलब अगर आपके पास कोई पेशेंट्स का कोई एक्सपीरियंस रहा हो, प्लांट्स टू पेशेंट्स वर्सेस फ्रूट्स टू पेशेंट्स किस प्रकार से सार्थक रह सकता है? डॉक्टर साहब कहते हैं मैं ही बताऊं, दरअसल क्या है, ये अतिवादी लोग होते हैं बेटा। फ्रूटेरियन ये नया है, ये नया अवतार है। जैसे डाइट में ना पहले मांसाहार शाकाहार फिर मांसाहार फिर अब नया चला है ना, कीटो डाइट ब्रेदेरियंस और वीगन। और वीगन एक लड़की नई लड़की थी फरीदाबाद की, नई वीगन बनी थी। जैसे नया को मुल्ला बनता है, मुल्ली बनती है, कोई नया बाबा बनता है, कोई नया डॉक्टर साइंटिस्ट बनता है। तो मैंने कहा बेटा इसमें तो बोले नहीं, ये बहुत बड़ा, ये वायलेंट होते हैं सब, शाकाहारी भी वायलेंट होते हैं। मैंने कहा बेटा इसमें तो कहाँ वायलेंस आ गया, हमारी गाय का 10 किलो दूध होता है, हम 2.5 किलो उसके बच्चे को पिलाते हैं, 2.5-3 किलो, और 7 किलो हम ले लेते हैं। तो बोले उसके बच्चे को ही पिलाना चाहिए। मैंने कहा उसके बच्चे को यदि 10 किलो दूध पिला देंगे तो उसको तो डायरिया हो जाएगा। नहीं, वो जीव से आ रहा है। अरे जीव से आ रहा है तो उसमें कोई उसका जो है कोई उसको कष्ट नहीं हो रहा, उसको ब्लड नहीं ले रहे, उसका हम फैट नहीं ले रहे, और वो तो उसके घास खाई और उसको प्रोसेसिंग किया और उसे मिल्क दे दिया। तो मैंने उसको बहुत समझाया, 10 तरह से उसको लॉजिक दिया, लेकिन नहीं, मैं तो कभी भी लाइफ में कोई भी मिल्क प्रोडक्ट खाऊंगी ही नहीं। मैंने कहा तुम जो ये शाक सब्जियां तोड़ करके खाते हो तो टहनी को तोड़ते समय, पालक को काटते समय भी कष्ट होता है, वो कभी सोचा? यदि आप मॉलिक्यूल लेवल पर जाओगे इमोशंस के, तो पालक को भी काटते हो, तो मेथी को भी काटते हो, धनिया को भी काटते हो, फ्रूट को भी आप टहनी से काटते हो, कुछ तो शाक सब्जियां तो कच्ची खाते हो, भिंडी कच्ची खाते हो, पकने के बाद थोड़ी खाते हो। तो मैंने कहा ऐसे तो तुम करने लगोगे तो तुम तो सब जगह पे जीवात्मा पेड़ों में भी होता है, जगदीश चंद्र बसु ने खोज किया था। तो कुछ लोग अतिवादी कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये जो अतिवादी है ना, जैसे डॉक्टर कृष्णा बता रहे थे कि हमारे एक डॉक्टर हैं, वो ऐसे कर रहे थे, फिर वो तो अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि वो दूसरों का अनादर नहीं करते। हमारे यहाँ एक डॉक्टर था, अभी भी है, बोले यहाँ यदि किसी ने आयुर्वेद की भी गोली दी तो मैं उसको गोली से उड़ा दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, और फिर वो डॉक्टर बेचारा बीमार पड़ गया तो मैंने उसको गोली से ठीक किया। उसको अस्थमा का अटैक आ गया, फिर मैंने श्वासारी और ब्रोनकॉम दिया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब गोली मारोगे कि नहीं? ऐसे कुछ लोग ना अतिवादी हो जाते हैं, हमें अतिवादी नहीं होना चाहिए। गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद में आता है, अति प्रश्न मां प्राक्षी गार्गी, बोले तू अति प्रश्न मत पुत्र सिर फट जाएगा। तो आदमी को अतिवादी कहीं नहीं होना चाहिए। बाकी हमें जो है विवेकी होना चाहिए। और डॉक्टर चिंतामणि जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसको सभ्य शब्दों में बोले तो हमें अपने अविवेक का भी बोध होना चाहिए। यदि उसको देसी भाषा में बोले तो अपनी मूर्खताओं का भी पता होना चाहिए। तो हम कितना अनजान हैं अभी। तो सृष्टि तो एक ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत है। और मैं उसको यदि रिफाइंड वे में बोलूं तो ये जो रिसर्च वाला काम है ना, ड्रग कंपनियों के द्वारा होगा तो उसमें बहुत ज्यादा त्रुटि रहने की संभावना है। इसलिए जो बहुत प्रामाणिक ऑथेंटिक साइंटिस्ट है उन्हीं की रिसर्च को हमें सबसे पहले कोटि पर रखना चाहिए। और उसमें भी इंटेंशन क्या है, मनसा बहुत बड़ी होती है साहब, कहीं पर भी हो, साइंस हो, घर हो, परिवार हो, राजनीति हो, सब जगह। तो मनसा, जैसे मान लीजिए मुझे प्रोटीन चाहिए तो बोले मैं तो प्रोटीन उससे लूंगा, सुअर से, मैं तो प्रोटीन गाय से लूंगा। अरे भाई जब प्रोटीन बहुत सी सोर्स है, उसके प्लांट सोर्स है, दूसरे जीव जंतुओं को मारना कोई जरूरी? तो कई बार अप्रोच में भी अंतर हो जाता है। तो ये लड़ाई तो बहुत लंबी है,
कि हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। लेकिन कम से कम हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो हमें अपने जड़ों से जुड़ते हुए और आधुनिक ज्ञान के आलोक में अपने जो वैदिक ज्ञान है, जो डॉक्टर साहब ने भी इस बात की तरफ बार बार संकेत किया, डॉक्टर हमारे अनुराग जी ने भी, श्रीवास्तव जी ने भी, और सारे जितने भी साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं, सुबह से 8-10 लोगों ने उसको बार बार कोट किया कि सत्य की खोज है। सत्य तो सनातन होता है, वो मेरा और आपका नहीं होता है, वो एलोपैथी और आयुर्वेद का नहीं होता है। सत्य तो सनातन है, और सनातन सत्य की खोज ही हम किस तरह से करें जो शाश्वत सत्य है। तो इसलिए उसमें ये सब पैथियां, ये सब संप्रदाय हैं, ये पार्टीबाजी है। मैं कांग्रेस वाला हूं, मैं बीजेपी वाला हूं, मेरी ये आइडियोलॉजी है, मेरी ये आइडियोलॉजी है। देश तो संविधान से चलेगा, देश तो कानून से चलेगा, और कानून भी सत्य पर आधारित होने चाहिए। कई बार कानून भी अपने हिसाब से हम बना लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ा है वह है यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, और इटर्नल ट्रूथ को ही हमारे यहाँ सनातन सत्य या सनातन धर्म का है। तो मुझे लगता है हमारी ये जो शाश्वत सत्य की खोज है, सनातन सत्य की खोज है, इटर्नल ट्रूथ की और जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। और अब इसमें इतने आग्रह आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात आती है हमारे ईगो। 4 चीजें तो बड़ी खतरनाक। अभी मैं एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन यू वालों ने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा भाई देखो बच्चों, खूब बड़े बनना, लेकिन 4 चीजों से बच के रहना। ईगो, इग्नोरेंस और लस्ट, लालच, ग्रीड, कुछ भी बोलो उसको। ईगो, इग्नोरेंस, ग्रीड, और चौथा है विलासिता। विलासिता को और थोड़े खतरनाक शब्दों में बोला जाए तो लोग पागलपन में पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं, मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। फिर एक जोर से हंसा, बोले तो यही नहीं करना तो फिर पैसे किस लिए कमाए? पैसे कमाते इसलिए कि दूसरे को ठोकेंगे। ईगो है, प्रदर्शित करेंगे, इग्नोरेंस है, और लालच नहीं होगी, ग्रीड नहीं होगी तो पैसा कमा ही नहीं सकते। और उसको भोग ही नहीं करना तो किसी लिए कमाना? मैंने कहा मुझे देखो, ना ईगो रखता हूं, ना इग्नोरेंस रखता हूं, ना कोई ग्रीड रखता हूं, और ना मुझे उसका भोग करना है। ये जितना भी पतंजलि योग पीठ है या जितने भी रिसर्च है, मैं कई बार कहता हूं, ने मेरी किडनी खराब है फिर भी रिनोग्रिट बना रहा हूं, ना मुझे शुगर है फिर भी मधुनाशिनी मधुग्रिट बना रहा हूं, ना मुझे कोई टेंशन है फिर भी जो है ध्यानोग्रिट बना रहा हूं। ये क्या है? आदमी को एक बड़ी सोच के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात पक्की है, हमको 30 साल जरूर लगे। 30 साल में रिनोग्रिट तो मिली, सो वो तो सेकेंडरी है। हमको आप डॉक्टर गुप्ता जी जैसे और आप महान वैज्ञानिक हमें मिल गए, कम से कम हमको भी लगा हम अकेले नहीं है। नहीं तो हमको कई बार नई एक अनुसंधान की दुनिया में एक नई क्रांति और नए आंदोलन का सूत्रपात होगा, और ये जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है पतंजलि में, ये उसके आधारशिला बनेगी, ये उसका फाउंडेशन बनेगा। तो ये इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो इसमें जिन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। देखो मैंने तो कहा था, देखो मैंने सारे काम बीच में थोड़ा 1 घंटा करके आया था, फिर जाके करने, तो ये तो लगना तो पड़ेगा, क्योंकि पूज्य आचार्य जी रहते थे तो मैं थोड़ा बीच में दूसरे काम भी कर लेता था। तो क्योंकि एक साथ हम भी कई कार्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आज जितने भी महापुरुष आए हैं उनको एक बार एक यादगार रहेगी कि जब पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का एक नया आंदोलन चल रहा था, तो उसमें आप जो है तटस्थ भूमिका में नहीं थे, आप कुछ नव सृजन की भूमिका में थे। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं अपने परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से सादर निवेदन करती हूँ कि वे आज के सभी स्पीकर्स को मोमेंटो प्रदान कर उनको आशीर्वाद दें। इसी के साथ अब मैं आदरणीय स्पीकर्स को आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर चिंतामणि जी, प्रोफेसर डॉक्टर मेजर MD रे जी,
Professor Vikram Surya Prakash Gota ji. Dr. Krishnamurti ji. Dr. Rishabh ji. Dr. Savita ji. जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने कहा था, किसी के कंधे जाम हैं, किसी के हाथ पैर जाम हैं, तो हाथ पैर खोलने के लिए योगा होगा अब। So let us end this session with the divine energy of Yog Netra. Without further ado, let's welcome on stage the Yog Gems from the University of Patanjali, Jyoti, Priya, Ananya, Anupma, Sunita, Pinky and Richa.